Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Picture this. It is the late 1990s. The very early days of the dot-com boom. Exactly. The internet is this wild, completely uncharted frontier. Right. Dial-up modems are literally screaming in home offices, and people are, still absolutely terrified to put their credit card numbers into a web browser. I remember that feeling well. Yeah. And right in the middle of all this, a man named Nick Swinmurn has an idea that almost everyone around him considers completely, just undeniably bizarre. He wants to sell shoes online. Now, you take a step back and look at the physical reality of that era, the skepticism was entirely justified. Oh, absolutely. I mean, think about the actual mechanics of buying a shoe. Right. Shoes require custom fittings. You have to, physically walk around the store to see if the heel pinches your foot. Not to mention, they involve incredibly bulky, expensive shipping. Yes. And the brick and mortar industry was already just completely plagued by high return rates because, human feet are incredibly idiosyncratic. They are all totally different. But Swinmurn had this contrarian belief. He held a very specific, deeply ingrained hypothesis. And what was that hypothesis exactly? Well, he looked at the $40 billion footwear market and saw that it was massively, just inefficiently fragmented. And 5% of that market was already happening through mail order catalogs. Oh, right. The old paper catalogs. Yeah. So he believed, he theorized that if people were willing to buy shoes from a paper catalog, a one-stop online shop could absolutely conquer the space. So what does he actually do? Because I assume he does not just sit around. No, he doesn't just write a 70-page business plan, sit in a room, and wait for venture capitalists to shower him with money. Right. He runs an experiment. A highly specific physical experiment. I love this part of the story. He walks down to his local mall, goes into a shoe store, and literally asks the manager if he can simply take photographs of the shoes. Just photos. Just photos. In exchange, if anyone buys the shoes online, Swinmurn promises to come right back and buy them at full retail price. Wow. So he builds a rudimentary website, posts the photos, and waits. And he takes his own dwindling personal cash and uses it to fulfill those early scattered orders just to prove that the underlying behavior people actually clicking buy on a picture of a shoe actually existed. He essentially places all his chips on testing one specific risky assumption. Exactly. And the result of that massive leap of faith, Zappos was born, it survived the spectacular crash of the dot-com bubble, and it was eventually acquired by Amazon for over $1 billion. You know what is so profoundly compelling about that story is the underlying architecture of Swinmurn's decision-making. Also, to the outside observer, it looks like a reckless gamble, just total luck. But analytically, he was behaving exactly like a Bayesian entrepreneur. Right. He started with a very strong prior belief that deviated from the consensus. And he didn't demand absolute certainty before taking action. Because you can never have absolute certainty. Yeah, exactly. Instead, he designed a low-cost, high-information mechanism to gather hard data. And then he updated his subsequent actions based entirely on what that data taught him. He replaced blind faith with a calibrated process of learning. He did. And that precise concept, that highly structured mathematical way of thinking about how we build things in the face of the absolute unknown, is our intellectual roadmap for today. I am very excited about this one. We are embarking on a comprehensive exploration of a truly remarkable book titled Bayesian Entrepreneurship. It is a fantastic piece of literature. It is an edited volume, thoughtfully published as open access by MIT Press. Now, before we get into the heavy machinery of how these probabilistic models actually function in the real world, we really need to acknowledge the architectural minds behind this work. Because this isn't just a single author's theory, is it? No, not at all. It is a massive synthesis of some of the sharpest strategic minds in academia today. The book is spearheaded by Ajay Agrawal and his exceptional editorial team. And because we are framing this discussion for those of you who are academic researchers, or perhaps you are just stepping into the terrifying void of your very first major research project, understanding the pedigree of these scholars is crucial context. It absolutely is. The editorial team represents a really fascinating cross-section of economics, strategy, and innovation management. Tell us a bit about them.
Well, for instance, Ajay Agrawal is a professor at the University of Toronto's Rotman School of Management. Right. He holds the Jeffrey Tabor Chair in Entrepreneurship and Innovation, and he is also the founder of the Creative Destruction Lab, which is practically a real-world laboratory for testing the very theories we are going to discuss today. Exactly. You also have Joshua Gans, another absolute heavyweight from Rotman, where he is a professor of strategic management and holds the Jeffrey S. Skoll Chair of Technical Innovation and Entrepreneurship. He has written some great stuff, hasn't he? Oh, incredibly influential works, like The Disruption Dilemma, which was published with MIT Press, and he co-authored Prediction Machines and Innovation plus Equality, also MIT Press. And the intellectual horsepower doesn't stop there. No, it really doesn't. The European perspective is anchored by Arnaldo Camuffo, a professor at Bocconi University and co-director of the Ion Management Science Lab at the SDA Bocconi School of Management. Yes. He is alongside Alfonso Gambardella, who is the Professor of Management of Innovation, also at Bocconi University. It is quite the lineup. And then, bringing the intense analytical rigor of MIT into the fold, you have Erin L. Scott, the senior lecturer at the MIT Sloan School of Management, and Scott Stern, the David Sarnoff Professor of Management at MIT Sloan. It is just a staggering assembly of minds. Truly. What makes this specific group so vital is that they are not just theorizing in a vacuum, They are actively studying, measuring, and teaching these concepts to thousands of founders and researchers. Taking abstract decision theory and basically grinding it into an applied science. Speaking of applied science and rigorous academic work, I want to take a brief moment to mention that our own producer, Mayukh Mukhopadhyay, has written a comprehensive book review essay on this exact edited volume. Oh, it is a wonderful review. It really is. That essay has been formally accepted and published in the Journal of Small Business and Entrepreneurship. Which is a highly respected journal. Yes. For those tracking academic impact factors, it is an ABDCB and ABS1 journal. We have placed the link to that review right in our show notes, and it serves as a phenomenal companion piece to our discussion today. I highly recommend it. It is an excellent distillation of the core academic contributions of the book, especially for anyone who wants to see how this work fits into the broader literature of management and entrepreneurship. Definitely check that out. Now, before we start unpacking the first chapter, I want to pull up a chair and intimately confide in you, our listener, about a recent shift in how we are operating behind the scenes. Yes, this is an important update. Starting from March 2026, we've become a weekly podcast featuring an episode on every Sunday and Monday. 2 days a week, no? Exactly. On Sunday, we will do a classic paper or a book review, much like our journey today. While Monday's episode will keep the focus tightly on publications from top-tier peer-reviewed journals. Right. We deeply love our loyal subscribers, and we thank you so much for supporting this initiative. The reality of our modern technological landscape is that AI-assisted podcasts are heavy on nature and climate. They really are. The processing power is immense. Yeah, with considerable water intake required by the back-end data centers that process these massive audio and language models. It takes a toll. It does. So, limiting our weekly release schedule is our specific, intentional way to give back to the climate change initiative without losing a single drop of the richness, depth, and intimacy of our discussions. It is, ironically enough, an exercise in Bayesian resource allocation. They'll love that. Optimizing our output based on the newly updated data regarding environmental impact. It is a vital optimization. We must adapt our priors when the physical data of the world demands it. Exactly right. With that shared understanding, I really want to urge you, whether you are a longtime subscriber to this channel or you literally just stumbled across this audio today, to make the time to read this thoughtfully crafted open access book yourself. It is completely free to read online. The link, as always, is in the show notes. For the next hour or so, we are going to gently walk alongside you, unpacking the style, the arguments, and the overarching themes of this book, chapter by chapter. And we are specifically framing this entire conversation for you. Yes. The person listening right now who is perhaps staring down a blank Word document, about to draft a PhD proposal, or maybe writing a grant application for a novel experiment. It can be a very lonely, terrifying place to be. It really is. We want this to be your intellectual armor against the anxiety of the unknown, because before you can conduct truly groundbreaking research or launch a venture, you really have to understand the fundamental laws of how human beliefs are formed, challenged, and ultimately updated. Let's step into the actual architecture of belief itself. I am ready. Where do we start? To do that properly, we have to start with the foundational framework.
which is laid out with remarkable clarity in Chapter 1 by Agrawal, Gans, Stern, and the rest of the editorial team. Okay. They establish 3 core tenets that define Bayesian entrepreneurship. The first tenet is the concept of heterogeneous prior beliefs. Heterogeneous prior beliefs. Oh. Okay, in plain English, what does that mean? It basically means that intelligent agents in the market do not share a common starting point. Okay. They look at the exact same data, they look at the exact same state of the world, and they fundamentally agree to disagree about what it means. Okay, let's unpack this right away, because if I'm remembering my classical economics correctly, don't the standard models usually assume the exact opposite, like common priors? Yes, they do. The idea that if we all have access to the same information, we should all logically arrive at the same conclusion. Right. What is fascinating here is how the authors dismantle that classical assumption. If everyone had common priors, if everyone looked at the internet in 1999 and agreed that selling shoes online was a brilliant, highly profitable idea, then the opportunity wouldn't even exist for an entrepreneur. Because the big companies would have just done it. Exactly. The big incumbent shoe retailers would have immediately allocated billions of dollars to dominate the space. That makes total sense. The very existence of an entrepreneurial opportunity or a groundbreaking research gap requires the majority of the world to be looking in the wrong direction, or to fundamentally misprice the value of an idea. Heterogeneity is the soil in which innovation grows. Perfectly said. So that leads us directly to the second tenet, which is that entrepreneurs or trailblazing researchers hold stronger or more optimistic prior beliefs about their specific opportunity than the rest of the population. Yes. But here's where I kind of have to push back a little bit. Please do. Doesn't saying they have stronger prior beliefs just mean they are irrationally stubborn. That is the common critique, yeah. Like, if I am a third-year PhD student and I am absolutely convinced that my highly niche theory of cellular biology is going to upend the entire field, despite my thesis advisor looking at me with deep, profound skepticism. Aren't I just suffering from blind, egotistical stubbornness? It is a really critical distinction, and the authors are incredibly careful not to conflate Bayesian optimism with, psychological delusion. Okay, how so? This is really about the difference between a normative ground truth and a positive subjective probability. Normative versus positive. Right. In a normative sense, we might say someone is stubborn if they refuse to accept an absolute known truth, like refusing to believe gravity exists. Right. But in the realm of radical innovation or frontier scientific research, that ground truth is completely unknowable. It hasn't been discovered yet. Exactly. Therefore, the entrepreneur's belief is a positive statement. You hold a contrarian theory of value. You see a hidden mechanism that others simply do not perceive. So it is not a flaw. Statistically speaking, you literally must be more optimistic about this specific idea than the general population. If your subjective probability of success was exactly the same as the skeptical consensus, you would never endure the massive financial, emotional, and temporal risks required to pursue it. That is a massive paradigm shift. It's not that Nick Swinmurn was just a universally happy, optimistic guy who thought every single lottery ticket he bought was a winner. No, not at all. He was specifically, strategically optimistic about the mechanics of selling shoes online, while the broader market disagreed. That targeted optimism was his heterogeneous prior. Precisely. Which brings us to the third and frankly most crucial tenet. Which is? These agents update their beliefs using Bayes' rule as new hard data comes in. Okay. And it is vital to state what this framework is not. It is not what management theorists sometimes call effectuation. Effectuation. Which is a theory suggesting entrepreneurs just blindly take action with whatever resources happen to be right in front of them without any structured hypothesis. Just throwing spaghetti at the wall to see what sticks. Exactly. And it is certainly not assuming that entrepreneurs are just emotional creatures plagued by cognitive biases, stumbling into success through sheer luck. Let's actually pause and explain the mechanics of Bayes' rule for a moment, because it gets thrown around a lot in data science. But I feel like it is deeply intuitive when you strip away the Greek letters. It is highly intuitive. Let's use an example. Let's say you are a researcher. You have a theory that a specific novel chemical compound will cure a particular fungal infection in a petri dish. Okay, I am with you. Because of your years of niche study, your heterogeneous prior, you are 80% confident this will work. That is a very strong prior. Very strong. Now, your colleagues think you're crazy. Their prior is 10%. Right.
So you run the assay, the test, and the assay comes back negative. The fungus thrives. Yeah. Now, a purely stubborn person says, the assay is wrong, my theory is right, and completely ignores the data. Pure dogma. Exactly. But a purely fragile person says, I am a total failure, my theory is garbage, and their confidence drops to 0% immediately. Right. Bayes' rule sits in the logical middle. It asks, what is the mathematical probability that the assay would fail even if the compound actually works? Like what if the equipment was faulty? Maybe the reagents were expired. Maybe the temperature in the lab was off by 2 degrees. You calculate that likelihood function and you mathematically combine it with your 80% prior to calculate your new posterior belief. So you update. Yes. Maybe your confidence drops from 80% down to 65%. You don't abandon the idea entirely, but you mathematically temper your belief based on the quality of that new evidence. What's fascinating here is if we connect this to the bigger picture, Bayes' rule is fundamentally the mathematics of changing your mind. I love that, the mathematics of changing your mind. It prevents overreaction to a single bad experiment, and it also prevents underreaction to a persistent pattern of failure. This exact mechanism is what Gambardella, Geiris, and Stern explore in Chapter 2 when they introduce the concept of Homo Entrepreneuricus. Homo Entrepreneuricus. They delved into what they call the Bayesian spirit. I just love that phrasing, the Bayesian spirit. It is great, isn't it? Because it acknowledges that an entrepreneur or a principal investigator isn't actually sitting in a boardroom manually writing out conditional probability equations every single time a minor variable changes. Right, they aren't robots. Homo Entrepreneuricus is a psychological archetype. It is a mindset that treats learning as a paramount strategic priority rather than viewing learning as just an accidental byproduct of trying to build a product or write a paper. So for you, listening right now, preparing for your dissertation defense or maybe outlining a multi-year study, embodying this Bayesian spirit means internalizing a deep, profound humility. Humility is the key word. It is realizing that your initial brilliant thesis is nothing more than a subjective prior. It is merely your starting coordinates on a map. Yes. You have a theory, but you must be structurally willing to let the harsh data you collect shift those coordinates. You are not running an experiment to prove yourself right. That is the crucial part. You are actively, aggressively testing to discover exactly where you might be wrong. That willingness to design experiments that could theoretically destroy your own premise, that is what separates a true Bayesian from a dogmatist. It is terrifying, but necessary. But as we venture further into the book, specifically chapters 3 and 4, authored by Joshua Gans and Ashish Arora, we hit a massive epistemological hurdle. Uh-oh. It is a hurdle every single pioneer faces. Nishan uncertainty. Nishan uncertainty. Okay, here's where it gets really interesting. Because up until now, we've been talking about risk as if it's a game of roulette. Exactly. Nishan uncertainty is named after the legendary University of Chicago economist Frank Knight. He wrote a seminal book back in 1921 called Risk, Uncertainty, and Profit. And Knight made a profound distinction that still absolutely governs economics today. What was the distinction? He argued that risk applies to situations where you don't know the specific outcome, but you do know the exact underlying distribution of probabilities. Right, like being in a casino. If I walk up to a roulette wheel, I don't know if the ball will land on red or black on this specific spin. That is unknown. Yes. But I know with absolute mathematical certainty that there are 18 red pockets, 18 black pockets, and 2 green pockets. Exactly. You know the parameters. I can calculate my precise exposure to risk. I can build a model. I can literally buy insurance against it. But Knight argued that true entrepreneurship does not operate in a casino. It does not. It operates in the realm of uncertainty situations where you not only don't know the outcome, but you don't even know the parameters of the game. You don't know how many pockets are on the wheel. You might not even be playing roulette. You cannot foresee all the possible outcomes, which means you fundamentally cannot assign objective probabilities to them. Wow. The classical economic view has often been somewhat fatalistic about this. They say if you can't foresee the outcomes, you can't use probabilistic reasoning. You are literally just guessing. And just wandering in the dark. But Gans argues fiercely against that paralysis in his chapter. And I want to use an analogy here that I think really crystallizes this for a researcher. Please do. Imagine standing at the threshold of a completely pitch black room. You have never been in this room. You have absolutely no blueprints. Right. In a state of standard risk, someone hands you a flashlight that flickers.
You can occasionally see the furniture, so you can estimate your path. That is risk. But under Nishan uncertainty, you have no flashlight. You are totally blind. You don't know if the room contains a comfortable sofa, a sheer drop-off into a basement, or a solid brick wall. Pure uncertainty. Exactly. Most people stand at the doorway, totally paralyzed, demanding more data before they enter. But the Bayesian researcher establishes what Gans calls a launch default. The launch default is such a brilliant conceptual tool. It is. You simply take one single step forward in the dark, and you reach your hand out. You don't commit to running a marathon in the dark. No, just a micro-action. Yes. You commit to a micro-action. The very millisecond your hand touches a cold brick wall, the state of the universe changes. You are no longer in a state of absolute ignorance. You now have a data point. There's a wall 3 feet ahead and slightly to your left. You immediately update your mental map. You use that tiny anchor to build a subjective probability distribution of what the rest of the room might actually look like. That analogy perfectly captures the mechanism. Even in the presence of profoundly incomplete information, your perception of the opportunity allows you to create a starting point. And then you build from there. Ashish Arora expands on this in Chapter 4, taking it from theoretical economics to the user's perspective. He demonstrates how this very process of taking the initial step, feeling the wall, and updating the map is the only way entrepreneurs can navigate dynamic markets. It is the only way forward. Crucially, it is also the only way they can secure resources from external stakeholders. Like investors. Investors, or in the academic world, grant committees. Yep. Because those people are still standing safely outside in the hallway, refusing to enter the dark room. Right. They want proof. You have to bring them back a piece of the brick to prove the wall exists. It transforms uncertainty from an excuse for paralysis into the primary engine of action. You experiment because you are uncertain. Exactly. But let's play devil's advocate for a moment here. Right. Let's look at Chapter 5 by Ostebro, Fossen, Gutierrez, titled Clueless, Biased, or Bayesian Machines. That is a great title. It is. If we look at the psychological literature, there are decades of studies suggesting that founders and obsessive researchers are just completely riddled with cognitive biases. Oh, absolutely. They suffer from massive overconfidence, optimism bias, and what psychologists call base rate neglect. Which is basically ignoring the broader statistical reality of failure. Right. So the question is, are our brains actually capable of this disciplined Bayesian updating, or are we just clueless apes basically fooling ourselves? This chapter is a masterful reinterpretation of human behavior. The authors don't deny that entrepreneurs exhibit behaviors that look like cognitive biases to an outside observer. They don't deny it. No, but they ask a really provocative question. What if these apparent biases are actually highly adaptive, rational responses when viewed through the lens of a Bayesian operating in a sparse information environment? Okay, wait. What do you mean by a sparse information environment? Let's consider the bias of overconfidence. Standard psychology might say a founder is irrationally overconfident. But these authors suggest the founder might simply be relying on case-based reasoning. So they are drawing on a very narrow, highly specific set of their own past lived experiences rather than consulting a massive general database. Exactly. If you are doing something that has literally never been done before, there is no massive database to consult. That is true. The general base rate of, most startups fail or most new chemical compounds are toxic is actually completely irrelevant to your specific and nuanced approach. Right, because you are doing something different. You rely on the few relevant cases you know. To an outside observer who has access to a broad but irrelevant data set, your initial priors look wildly skewed and biased. But to you, they make perfect sense. Yes. Given the sparse data actually relevant to your specific innovation, your subjective weighting function is entirely rational. Wow. This has profound implications for the emotional well-being of early career researchers. It really does. Think about the classic academic afflictions. You have crushing imposter syndrome on one hand, or unearned blinding arrogance on the other. We have all seen both. If you are a first-year PhD student, maybe your psychological turmoil isn't a personality flaw. Maybe it is just case-based reasoning, working with a tiny data set. Absolutely. You have only written maybe 3 major papers in your entire life.
Your mental model, your prior of what constitutes a quote-unquote good paper is built on an n equals 3 sample size. Of course it is noisy. Of course you misjudge your own competence. You aren't intrinsically broken or biased. You are just extremely early in your Bayesian updating process. That's exactly it. As you write more papers, as you attend more conferences, as you face brutal peer review, you gather more cases. Yep. The noise reduces. Your subjective prior aligns closer to the actual reality of the field. That is an incredibly empathetic and mathematically rigorous way to look at the academic learning curve. It depathologizes the struggle. It really does. It reframes the anxiety of the novice as a natural artifact of a sparse information environment. So, if part 1 of this book has successfully established how the mechanics of updating work, the actual math of changing your mind, it leaves a glaring philosophical question. Where do the priors come from? Exactly. Where do these initial, supposedly stubborn, heterogeneous beliefs actually come from in the first place? How do you dream up the map before you step into the dark room? Right. That brings us to a major transition in the text, part 2. Priors in entrepreneurial decision-making, which encompasses chapters 6 through 8. We are moving from the reactive mechanics of updating to the proactive genesis of the theory itself. And this transition requires a leap beyond pure statistics. Yep. Chapter 6, authored by Ehrig, Phelan, and Zenger, is titled Causal Reasoning and the Scientific Entrepreneur, Beyond Bayes. Beyond Bayes. The title alone is a shot across the bow. It really is. They argue that simply possessing a Bayesian updating mechanism is completely insufficient for true innovation. You need a higher order cognitive tool. And what is that? Counterfactual causal logic. Here's where it gets really interesting. Because these authors are essentially saying that data is the outcome of the entrepreneurial process, not the input. Correct. Now wait. If I am a young researcher raised on modern data science, I have been explicitly taught the exact opposite. Yes, you have. I have been taught to worship at the altar of big data. I am told to scrape massive data sets, run algorithmic regressions, and just let the data objectively speak for itself. Shouldn't I just be staring objectively at the data until my thesis magically reveals itself? This raises an important question about the philosophy of science itself. The authors are brutally exposing what they call the all-seeing eye fallacy. The all-seeing eye fallacy. This is the pervasive, deeply flawed idea that you can just passively observe a mountain of data and the absolute truth will organically emerge without any human bias. Like the data just organizes itself into a brilliant discovery. Exactly. It traces back to a very naive form of inductivism. But data does not exist in a vacuum. Data is utterly silent. It is dumb. You need a pre-existing theory to even know what data is worth looking at, or what experiments are worth running in the first place. If you don't have a causal logic, a structural theory, explaining why mechanism A might cause outcome B, you are literally just drowning in statistical noise. It reminds me of the philosopher Karl Popper. Yes, the swan analogy. Exactly. You can observe 1 million white swans in a row, and the data clearly tells you all swans are white. But you need a theory, a creative leap, to know where to go look for the black swan. Precisely. So the entrepreneur, the scientist, has to write and aggressively rewrite their structural assumptions before they even touch the data. Pure Bayesian logic works flawlessly when all the variables are known, the state space is defined, and you are just updating the probabilities based on incoming signals. Like the roulette wheel. Exactly. But entrepreneurs and researchers operate in completely undefined domains. You have to use counterfactual reasoning. You have to close your eyes and imagine a state of the world that literally does not yet exist. You have to hallucinate the future a little bit. You build a theoretical architecture in your mind. You ask, if I intervene in the world in this highly specific way, what chain reaction will occur? The data you eventually collect is generated because you articulated a novel problem and intervened to solve it. It is the profound difference between reading a map that someone else printed and being the cartographer drawing the map from scratch. It is a beautiful way to put it. But once you have drawn that initial map, Yeah. once you have your counterfactual causal theory, how do you actually subject it to the real world without destroying yourself in the process? That is the big risk. This is where Len Novelli's work in Chapter 7, a scientific approach to entrepreneurial decision-making, becomes absolutely indispensable. She breaks this theoretical process down into 4 concrete, actionable steps. Novelli's framework is the vital bridge between wild, creative intuition and rigorous discipline learning. Walk us through the steps. The 4 steps are completely sequential. First, theory formulation. Meaning explicitly stating your causal logic. Exactly. Second,
Hypothesis derivation. Translating that broad theory into a specific, measurable prediction. Okay. Third, evidence gathering. Designing and actually executing an experiment in the real world. And fourth? And fourth, rigorous evaluation. Objectively comparing the evidence against the hypothesis to update the theory. Now, to a scientist listening, that just sounds like the standard scientific method. We learned that in middle school. Right. But applying it to business, or applying it strictly to the meta process of managing a research career, yields incredible results. The evidence Novelli brings to bear is astonishing. She highlights data drawn from randomized control trials involving thousands of early-stage startups in Italy. Yes, the methodology of those trials is fascinating. How did they set it up? They took a massive cohort of founders. They taught the control group standard business skills, marketing, accounting, basic operations. The usual MBA stuff. Exactly. But they taught the treatment group to act like scientists, to explicitly write down their assumptions, formulate hypotheses, and run cheap experiments. And the outcome is not what the stereotypical motivational speaker would tell you. The startups that were trained in the rigorous scientific method did not magically succeed more often. No, they didn't. They didn't hit unicorn status at a higher rate. Wait, really? So what was the benefit? The magic of the scientific approach wasn't in producing more successes. It was in the radical efficiency of their failures. The data clearly showed that entrepreneurs who acted like scientists terminated bad projects much faster. They killed the bad ideas. They systematically identified the fatal flaws in their core causal logic early in the life cycle. Instead of burning through all their cash and years of their lives on a doomed idea, they killed the project, preserved their capital, and pivoted to a more viable adjacent opportunity. What a staggeringly profound lesson for anyone in academia. We have all seen it. We all know that one colleague, or maybe we have been that person, who holds on to a doomed, agonizing research topic for 5 long years. It is painful to watch. Why do we do it? Yeah. Because we rely on our gut. Because our identity gets totally tied up in the theory. Or because we are terrified to run the one specific, definitive experiment that would prove our foundational assumption completely wrong. We avoid the very test that would set us free. Yes. The scientific approach, this structured Bayesian updating, grants you the psychological and intellectual permission to quit a bad idea quickly. In this framework, quitting is not a moral failure. Not at all. It is the ultimate successful Bayesian update. It is the optimal reallocation of your most precious resources, your cognitive bandwidth and your time. And speaking of allocating resources, that leads us directly to Chapter 8, authored by Ramananda, which focuses on entrepreneurial finance. Right, because once you have your brilliant theory and you know how to test it, you almost invariably need someone else's money to actually run the test. Whether that is a venture capitalist on Sand Hill Road or the National Science Foundation. If we connect this to the bigger picture, raising funds isn't just a transactional exchange of cash for equity or cash for academic prestige. It is fundamentally an exercise in Bayesian persuasion. Bayesian persuasion. Explain the dynamic there. Picture it. The founder or the lead researcher arrives with this incredibly strong, optimistic prior belief. They are pumped up. Right. The investor or the grant committee, by definition, holds a much lower, highly skeptical prior. Naturally. They are guarding the resources. Multi-stage financing, raising a small seed round, then a Series A, then a massive Series B, or in academia, getting a small departmental grant, then a massive NIH R01 grant must be viewed completely through a learning lens. So the entrepreneur has to design their experiments not just to learn for their own personal curiosity, but to systematically, surgically alleviate the specific doubts residing in the mind of the investor. Exactly. You are not just buying runway or time with that initial seed money. You are buying the specific quantum of information required to shift the investor's posterior belief just enough to unlock the next tranche of funding. That requires immense empathy. It really does. And strategic foresight. If the investor's primary foundational doubt is, I believe you can build the software, but I doubt customers will actually pay for it, then spending your seed money on optimizing the back-end code is a catastrophic failure of Bayesian persuasion. Because you didn't answer their question. Exactly. Your experiment must be entirely focused on customer willingness to pay. You are deliberately designing the likelihood function of your experiment to persuade a specific skeptical audience.
It really is empathy. You have to inhabit the mind of your greatest critic, understand the exact topographical shape of their skepticism, and design the precise experiment that cures it. That is beautifully put. And that realization perfectly transitions us into part 3 of our intellectual journey, entrepreneurial experimentation and communication, which encompasses chapters 9 through 11. Because once you successfully persuade that committee and secure that massive grant, how do you ensure the experiments you actually run in the lab don't just spit out pure garbage? This is where the theoretical rubber meets the unforgiving road of reality. It really is. Chapter 9 by Hyunjin Kim is titled Learning from Data. She explores the painful reality that, quite often, well-funded, well-intentioned experiments entirely fail to result in any learning whatsoever. Not at all. The primary culprits she identifies are uninformative experiments, a general inattention to data, and model bias. Let's focus on the uninformative experiment, because this is the silent killer of academic careers. Yeah. Let's use an analogy that I think is highly relevant to a researcher. Okay, let's hear it. Imagine you develop a groundbreaking new drug that you theorize will radically improve cognitive focus and memory retention. Okay. You manage to get funding for a clinical trial. But because of logistical laziness, you decide to administer the drug to a cohort of undergraduate students at 2 a.m. on a Tuesday, the night before their organic chemistry final, right after they have consumed 4 highly caffeinated energy drinks. That is a terrible experimental design. It is. The underlying signal, the actual isolated neurological effect of your drug, is completely, hopelessly drowned out by the deafening noise of their sleep deprivation, the caffeine, and the intense cortisol of their exam stress. Right. In statistical Bayesian terms, the probability of seeing scattered, unfocused results, given that your drug works, is basically identical to the probability of seeing scattered, unfocused results, given that your drug does not work. That is a phenomenal translation of the mathematics. Let's look at the actual Bayes equation for a second. Okay. The posterior belief equals the prior belief multiplied by the ratio of the probability of evidence given the hypothesis to the overall probability of evidence. Right. If the noise is so high that those two numbers are equal, the ratio is exactly 1. Your prior is multiplied by 1. The math dictates that your posterior belief after the clinical trial will be exactly the same as your prior belief before the trial. You spent $1 million, you tortured those poor undergraduates, and your uncertainty remains perfectly unchanged. You learned absolutely nothing. This highlights why the rigorous, isolated design of the experiment is paramount. You must isolate the variables. You must test the students at 10 a.m. on a well-rested Tuesday. You must reduce the noise so the signal can actually shift the probability. And even if you design a pristine experiment and get a clear signal, Kim warns about the insidious nature of model bias. Yes, model bias is incredibly dangerous. If you have spent 4 years of your life tied to this cognitive drug, you fall in love with your theory. You start looking at ambiguous data and twisting it into confirmation. Or worse, you see clear negative data and you completely ignore it, claiming the equipment was faulty. You have to be ruthlessly, painfully objective with the scale. Which brings us to the strategic choices you make once you do have clear data. Chapter 10 by Joshua Krieger is titled Charting the Path. Charting the path. Right. Once you are running highly informative experiments, you are generating data that forces you to make complex, multidimensional choices. Krieger focuses on visualizing and choosing among alternative development paths. Because whether you are a biotech startup or a university lab, you never, ever have the resources to test every possible direction at once. Exactly. This draws heavily on real options theory. You have to quantify the relative value of different venture directions. Think of your project as a massive, sprawling decision tree, where each branch represents a different strategic choice. Like a different target receptor for a drug, or a different demographic market. Or a completely different coding architecture. Krieger emphasizes that a core skill of the Bayesian entrepreneur is understanding the cost of switching paths. The switching costs. So if I go down one branch for 6 months and the data finally tells me it is a total dead end, how painful, expensive, and time-consuming is it to back up to the trunk and take the adjacent path? Precisely. A master Bayesian anticipates these switching costs before they even begin. They structure their very first, earliest experiments to test the assumptions that, if proven wrong, would be the absolute most catastrophic and expensive to fix later. It's the classic sunk cost fallacy applied to learning. Imagine a researcher deciding whether to learn a highly specific, niche, ancient coding language
just to analyze data for one specific project. Oh, that happens all the time. The Bayesian asks, if this project pivots in 3 months, does that niche coding language apply to the new path? Or is it a total sunk cost? If it's a sunk cost, maybe I should design the experiment using a more versatile, generalized tool first. You have to visualize the entire canopy of the tree before you start climbing the trunk. Now, as you are climbing this complex tree, the good news is you aren't completely alone. No, you aren't. You have mentors, you have a thesis committee, you have peer reviewers. And that dynamic brings us to Chapter 11 by Susan Cohen and Rembrandt Koning on advice and the Bayesian entrepreneur. This chapter highlights a fascinating inherent paradox in the entrepreneurial psyche. We established back in Chapter 1 that pioneers absolutely require strong, optimistic, heterogeneous priors to take the massive lead of action in the first place. Right, you have to be a little bit crazy to start. But that very strength of belief, that necessary armor, makes them incredibly advice-averse. Advice-averse. Because they are so confident in their unique vision, they naturally tend to view advisors, mentors, and reviewers as overly pessimistic, risk-averse, or simply ignorant of the nuanced reality. It is the classic arrogant founder trope. You just don't see my vision. You don't understand the paradigm shift. Exactly. But from a mathematical standpoint, high-quality advice is a crucial, high-leverage mechanism for a Bayesian update. It is often infinitely cheaper and faster than running a physical experiment. There is this wonderful, iconic anecdote in the book about the founding of Hotmail that illustrates the sheer power of advice perfectly. Oh, I love the Hotmail story. Let's travel back to 1996. Sabir Bhatia and Jack Smith had just launched Hotmail. At the time, email was tied to your internet service provider. If you had AOL, you had an AOL email. Right. The idea of a free, web-based email that you could access from any computer in the world was revolutionary. Yeah. But they were struggling to acquire new customers. They were stalling out. They were trying standard marketing, radio ads, billboards, and their growth was just totally flatlining. They were burning through their seed capital. They were in that dark room. Yes. So they sat down with their lead investor, Tim Draper. And Draper gave them a seemingly tiny, almost throwaway piece of advice. He said, why don't you just put the phrase, get your free email at Hotmail, at the bottom of every single message sent by an existing user. Such a simple idea. Sabir and Jack initially resisted. They thought it would annoy users. But they tested it. They updated their prior. And that one single line of code created an unprecedented viral loop. Which is brilliant. Every single email sent was a free advertisement. They garnered 30 million users in under 3 years and sold to Microsoft for hundreds of millions of dollars. Draper's advice essentially birthed the entire concept of viral marketing. It is a stunning, historically significant example. And what Cohen and Koning note in their analysis is that advice serves a very specific structural function in the Bayesian framework. Now, they are careful to note the dangers. What are the dangers? Yes, advice is notoriously cheap. And yes, advice can be highly correlated. Meaning what? Meaning, if you ask 5 senior professors in your highly insulated department, they might all give you the exact same biased conventional wisdom, which can lead to academic herding and groupthink. Right. You were just getting the same bad advice 5 times. But when you find crucial, high-quality, uncorrelated advice from someone with a totally different vantage point, it is essential for shattering confirmation bias. It fundamentally broadens the entrepreneur's or the researcher's theoretical state space. Let's go back to our darkroom analogy for a second. Right. Draper didn't just hand them a better flashlight to look at the exact same corner of the room. He pointed to a part of the darkroom they didn't even conceptualize existed. He expanded the room. He didn't just tell them to run their radio ads better. He introduced a completely new exogenous causal logic to their theory of value. Exactly. The best advice doesn't just validate or invalidate your existing theory, it gives you an entirely new, potentially vastly superior theory to test. So we have covered an immense amount of ground today. We know the mathematical theory of updating, we know how to secure financing through empathy, we know how to design experiments that eliminate noise, and we know how to absorb perspective-altering advice. We have covered the whole life cycle. But how do we pass this architectural knowledge down? This transitions us to the final leg of our journey. Part 4. Entrepreneurial Pedagogy and Practice, covering chapters 12 through 14. If the Bayesian mindset and the structured scientific approach are the absolute secrets to navigating uncertainty, how do we actually teach this to the next generation of founders? That is the ultimate question. Or, more importantly for you listening to us, how do you teach this discipline framework to yourself?
This is truly the frontier of management science. Chapters 12 and 13, authored by Aaron Scott and Chiara Sprena, tackle the pedagogical challenge head-on. And what do they find? They look at vast amounts of evidence from the field, particularly drawing on those massive randomized control trials we discussed earlier. And their findings are a pretty stark indictment of traditional education. Really? They find that traditional pedagogical methods, which primarily focus on teaching know what, are woefully ineffective at creating successful innovators. By know what, you mean rote facts. Memorizing accounting principles or reading Harvard Business School case studies about how Apple launched the iPhone. Precisely. Knowing what Steve Jobs did, or knowing what Amazon's supply chain looks like today, does not equip you with the cognitive tools to build the next Amazon in a completely different technological era. It suffers from massive survivorship bias. It really does. We study the lottery winners and assume their specific choices are universally applicable laws of physics. Scott and Spina argue that to truly prepare someone for uncertainty, you have to transition from teaching know what to teaching know how and know why. You have to teach the underlying invisible mechanics of belief updating, causal reasoning, and experimental design. So, what does this all actually mean for you? You are sitting at your desk, staring at a blank research proposal or a grant application. You have spent years absorbing the facts of your field. You have the know what. How do you actively apply the know how and know why without just getting completely overwhelmed? It means you must adopt concrete, practitioner-oriented tools to manage the immense cognitive load. Spina extensively discusses the use of conceptual tools like theory maps and hypothesis canvases. Now, to an academic, these might sound like corporate buzzwords or trivial busywork. They do, but they serve a profound cognitive function. They are physical or digital spaces where you are forced to explicitly structurally write down your causal logic. You cannot just have a vague feeling. You must write, I believe intervening with variable A will lead to outcome B, specifically because of mechanism C. It is about forcing intellectual honesty. By making your abstract, internal scientific thinking utterly concrete, you externalize your subjective priors. If it just lives in your head, human psychology is so slippery that when the experiment fails, you will subconsciously rewrite history and tell yourself, well, I never really believed that assumption anyway. We all do that. But if your prior is written in bold marker on a canvas pinned to your lab wall, you cannot hide from the data. It prevents confirmation bias from protecting your ego. Externalization is the enemy of self-deception. And that realization takes us to our final, deeply insightful chapter, Chapter 14, Introducing Causal Reasoning by Kawali, Froese, Janis, Kazemi, and Pandy. What do they focus on? They address the huge elephant in the room, the sheer, exhausting cognitive load of what the Nobel laureate Daniel Kahneman famously called System 2 thinking. Right, from his book Thinking Fast and Slow. Exactly. Developing a robust causal theory, explicitly writing it out, and then painstakingly updating it probabilistically based on statistical evidence requires a tremendous amount of System 2 deep analytical effort. It literally burns glucose. It is exhausting. It is. Entrepreneurs, and frankly many driven researchers, naturally gravitate towards System 1 thinking. Fast, intuitive, passionate, action-oriented behavior. We want to be in the lab mixing chemicals. We don't want to be at a desk calculating likelihood functions. Yes, of course not. To bridge this gap, to overcome the cognitive friction, the authors strongly advocate for the use of computer-based simulation platforms as a vital tool. But wait, let me inject some skepticism here. Are we genuinely trying to turn passionate, action-oriented dreamers or brilliant intuitive scientists into spreadsheet-obsessed middle managers? I hear that concern a lot. If I want to be a trailblazing researcher, I'm going to be out in the field observing the world, getting my hands dirty. I don't want to be running sterile computer simulations all day. Doesn't heavily relying on software models kind of kill the intuitive magic of discovery? That is a very common and understandable fear, but it really misunderstands the role of the tool. The authors calmly clarify that this isn't about replacing intuition with algorithms. It is about harmonizing wild intuition with rigorous structure. Harmonizing the two. Right. The computer simulation acts as a low-cost sandbox. Because human brains are notoriously terrible at calculating complex probabilities, just look at how many brilliant mathematicians fail the Monty Hall problem.
The software acts as an exoskeleton for your mind. An exoskeleton for your mind. That is brilliant. It allows you to safely test the logical flow of your causal reasoning and run thousands of probabilistic what-ifs before you spend real time, real grant money, and real emotional energy in the physical world. Ah, I see. It doesn't replace the passion. It mitigates the catastrophic risk of ruin. Precisely. By simulating the complex interactions of your theory, you can use the software to identify the single most fragile, critical assumption in your entire model. Then you can take your passion and direct it intensely at testing that one specific assumption in the real world. It ensures that when you do take physical action, it is hyper-focused, maximally informative, and scientifically sound. Exactly. You are building a virtual high-fidelity version of the dark room to practice your navigation before you ever walk through the real door. That is incredibly powerful. As we begin to wrap up this extensive exploration of Bayesian entrepreneurship, it is genuinely hard not to take a step back, look at the entire framework we've discussed for the past hour, and see how profoundly universally applicable it is beyond just starting a tech company or writing a dissertation. This raises an important question, perhaps the most important question of our entire discussion. What is that? If we view startups and we view complex scientific research projects as nothing more than a series of structured Bayesian updates, what if we applied this exact same rigorous logic strictly to the narrative of our own lives and careers? That is a beautiful thought. Think about what that actually means for your daily existence. In a traditional mindset, a failed peer review, a rejected grant application, a startup that goes bankrupt, or even a failed job interview is viewed as a definitive dead end. It feels like a judgment of your worth. But in a fully internalized Bayesian framework, none of these events are failures. They are simply highly informative signals. I'll take that. They are a likelihood function interacting with a reality. They are the brick wall you just touched in the darkroom. Every single no you receive allows you to update your subjective priors. It allows you to recalibrate your mental map and pivot your life space to a more viable, fruitful path. Exactly. If you truly deeply internalize this mathematical philosophy, uncertainty transforms. It is no longer a paralyzing threat to be avoided. It is the very fabric of opportunity itself. The only true catastrophic failure in life is touching the wall in the dark, pretending it doesn't exist, and refusing to update your beliefs when the universe gives you new data. That is exactly it. You step boldly into the dark room, you reach out your hand, you feel the cold brick of reality, and your map gets a little bit clearer. Thank you for sharing this quiet, expansive, and deeply reflective time with us today. We truly hope this gentle but rigorous intellectual journey through the mechanics of belief, causality, and uncertainty has equipped you with some comfort and some profound clarity for your own upcoming projects. A quick reminder that the link to this brilliant open-access MIT Press book, Bayesian Entrepreneurship, as well as our producer's wonderfully detailed review essay, are right there waiting for you in the show notes. Please, take a deep breath, step away from the anxiety of the blank page, embrace your own uncertainty, keep systematically updating your priors, and have a wonderful, thought-provoking week ahead. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ এন্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা আর আমি পাভলভ। ৯০-এর দশকের শেষের দিকের কথা। অনলাইনে জুতো বিক্রির কথা ভাবলে প্রথমেই যে সমস্যাটার কথা মাথায় আসে তা হলো সাইজ আর ফিটিং। একদম, মানুষ জুতো নিজের পায়ে পরে না দেখে সাধারণত কিছুতেই কিনতে চায় না। ঠিক। আর নিক সুইনমার্ন নামের এক তরুণ ঠিক এই অসম্ভবকে সম্ভব করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তার আইডিয়া ছিল ইন্টারনেটে জুতোর এক বিশাল রিটেল স্টোর তৈরি করা। কিন্তু তখনকার প্রখ্যাত ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট ফার্ম সেকুইয়া তার এই আইডিয়াকে পুরোপুরি অবাস্তব বলে মুখের ওপর রিজেক্ট করে দিয়েছিল। কারণ তাদের যুক্তি ছিল এই মডেল কাজ করার কোনো অতীত ক্রমান্ত নেই। হ্যাঁ, কিন্তু নিক দমে যাননি বা হাওয়ায় কোনো প্রাসাদও বানাননি। তিনি একটা অদ্ভুত কাজ করলেন। তিনি স্থানীয় জুতোর দোকানে গিয়ে জুতোর ছবি তুলে সেগুলো অনলাইনে পোস্ট করতে শুরু করলেন। আর যখনই কোনো ক্রেতা অর্ডার দিতেন, নিক তখন নিজের পকেটে টাকা খরচ করে সেই দোকান থেকে জুতোটা কিনে ক্রেতাকে পাঠিয়ে দিতেন।
মানে তিনি আসলে কোনো ইনভেন্টরি বা গুদাম ছাড়াই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে মানুষ ইন্টারনেটে জুতো কিনবে কিনা। এই সামান্য একটা এক্সপেরিমেন্ট তার বিশাল একটা তত্ত্বকে প্রমাণ করেছিল। আর ঠিক এর ওপর দাঁড়িয়েই জন্ম নেয় বিশ্বখ্যাত কোম্পানি জ্যাপোস। জ্যাপোসের এই শুরুর গল্পটা যে কোনো গবেষক বা উদ্যোক্তার জন্য একটা মাস্টার ক্লাস। আসলে নিক সুইনম্যান কিন্তু অন্ধকারে ঢিল ছোড়া কোনো সাধারণ জুয়ারি ছিলেন না। একদমই না। আবার তিনি এমন কোনো জাদুকরও ছিলেন না যার কাছে ভবিষ্যতের কোনো ক্রিস্টাল বল ছিল। তাকে বরং বলা যায় হোমো এন্ট্রপ্রেনরিকাস। হোমো এন্ট্রপ্রেনরিকাস, দারুণ একটা টার্ম। হ্যাঁ, তিনি আসলে নিজের একটা প্রাথমিক হাইপোথিসিস বা তত্ত্বের উপর কাজ করছিলেন, আর অত্যন্ত কম খরচে বাস্তব দুনিয়া থেকে নতুন ডেটা সংগ্রহ করে তিনি সেই তত্ত্বকে যাচাই করছিলেন। ঠিক এই জায়গাটি থেকে আমাদের আজকের এই গভীর বিশ্লেষণের শুরু। জ্যাপোসের এই উদাহরণটি যে ফ্রেমওয়ার্কের উপর দাঁড়িয়ে আছে তাকেই বলা হচ্ছে বেশিয়ান এন্টারপ্রেনারশিপ। এই আলোচনাটা আমরা করছি MIT প্রেস থেকে 2026 সালে ওপেন অ্যাক্সেস হিসেবে সদ্য প্রকাশিত একটা যুগান্তকারী বইয়ের উপর ভিত্তি করে। হ্যাঁ, বইটির সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন একটা স্বপ্নের মতো টিম। ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো রটম্যান স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের প্রফেসর এবং ক্রিয়েটিভ ডিস্ট্রাকশন ল্যাবের প্রতিষ্ঠাতা অজয় আগরওয়াল। সাথে আছেন বোকোনি ইউনিভার্সিটির 2 স্বনামধন্য প্রফেসর আর্নাল্ডো কামুফো এবং অ্যালফোনসো গ্যাম্বারডেলা। আর রটম্যান স্কুলেরই প্রফেসর জশুয়া গ্যান্স, যিনি আবার বিখ্যাত বই দ্য ডিসরাপশন ডিলেমা লেখক। এছাড়াও আছেন MIT স্লোন স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের বিশিষ্ট ফ্যাকাল্টি এরিন এল এবং স্কট স্টার্ন। এত চমৎকার একটা প্যানেল। আর আমাদের প্রযোজক ময়ূখ মুখোপাধ্যায় এই সম্পাদিত বইটির ওপর একটা দারুণ বুক রিভিউ লিখেছেন। ঠিক, যেটা বিশ্ববিখ্যাত ABDC-B এবং ABS-1 র্যাঙ্কড জার্নাল অফ স্মল বিজনেস অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপে গৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে। যারা বিষয়টা নিয়ে আরও জানতে চান তাদের জন্য এই রিভিউর লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। এই গবেষণার প্রসঙ্গেই একটা ছোট আপডেট দেয়া দরকার। শ্রোতাদের ভালোবাসায় মার্চ 2026 থেকে এই আলোচনাটা প্রতি রবিবার এবং সোমবার প্রকাশিত হচ্ছে। হ্যাঁ, রবিবারের পর্বে ক্লাসিক পেপার বা বুক রিভিউ নিয়ে আলোচনা হয়, আর সোমবারের পর্বে প্রথম সারির পিয়ার রিভিউর জার্নালের গবেষণাপত্র নিয়ে। কিন্তু সপ্তাহে 2টো পর্ব কেন সেটাও বলা দরকার। AI চালিত ব্যাকএন্ড ডেটা সেন্টারগুলোতে প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহৃত হয়, যা প্রকৃতির উপর দারুণ চাপ ফেলে। একদম, তাই পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে সাপ্তাহিক রিলিজ সীমিত করা হয়েছে, যাতে আলোচনার গভীরতা না হারিয়েও প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করা যায়। ঠিক কথা। চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা হোক বা না হোক, যাদের আগ্রহ আছে তারা যেন সময় করে শো নোটসে দেওয়া লিঙ্ক থেকে এই ওপেন অ্যাক্সেস বইটি অবশ্যই পড়েন। যারা একাডেমিক গবেষণায় একেবারে নতুন বা সবেমাত্র নিজেদের গবেষণার পথ চলা শুরু করতে চলেছেন, আজকের আলোচনাটা মূলত তাদের জন্যই। তো বেসিয়ান এন্টারপ্রেনারশিপ বুঝতে গেলে সবার আগে বুঝতে হবে এটা আসলে কি নয়। একাডেমিক জগতে খুব পরিচিত 2টো শব্দ আছে। একটা হলো নাইটিয়ান আনসার্টেনিটি এবং অন্যটি ইফেকচুয়েশন। হ্যাঁ, অর্থনীতিবিদ ফ্র্যাঙ্ক নাইটের মতে কিছু অনিশ্চয়তা এতই গভীর হয় যে তার কোনো গাণিতিক পরিমাপ করা যায় না। ধরা যাক লটারির টিকিট কাটার একটা নির্দিষ্ট সম্ভাবনা বা রিস্ক আছে, যেটা অঙ্ক কষে বের করা যায়, কিন্তু আগামী 10 বছরে পৃথিবীতে এলিয়েন আসবে কিনা সেটা তো মাপা সম্ভব নয়। আর যদি আমরা ধরে নিই যে সব কিছুই এই নাইটিয়ান আনসার্টেনিটি, তাহলে তো একজন উদ্যোক্তার পক্ষে কোনো পরিকল্পনাই করা সম্ভব নয়। একদম। আর অন্য দিকটি হলো ইফেকচুয়েশন। এটাকে যদি খুব সহজ একটা উপমা দিয়ে বলি, ধরুন রান্না করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট রেসিপি নেই। ফ্রিজ খুললে চোখের সামনে যে সবজি বা মশলা পাওয়া যাচ্ছে, শুধু সেগুলো দিয়েই একটা রান্না দাঁড় করানোর চেষ্টা করা। হ্যাঁ, এখানে আগে থেকে কোনো বড় লক্ষ্যের দিকে এগোনোর পরিকল্পনা থাকে না। কিন্তু বেশিয়ান পদ্ধতি এই 2 চরমপন্থার মাঝখানের একটা বিজ্ঞানসম্মত রাস্তা তৈরি করে। মানে এটা বিশ্বাস করে যে অনিশ্চয়তা থাকেও উদ্যোক্তারা একটা প্রাথমিক সম্ভাবনা বা প্রায় তৈরি করতে পারেন, তাই তো? ঠিক তাই। তারা ইফেকচুয়েশনের মতো শুধু হাতের কাছের সম্পদ দিয়ে অন্ধভাবে এগোন না। তাদের একটা মাস্টার রেসিপি থাকে, কিন্তু তারা সেই রেসিপিটাকে ধ্রুব সত্য বলেও ধরে নেন না। যখনই তারা নতুন ডেটা পান, ঠিক যেমন জ্যাপোসের নিক সুইনম্যান পেয়েছিলেন, তারা সেই ডেটার ভিত্তিতে নিজেদের প্রাথমিক বিশ্বাসটাকে পরিমার্জন করেন। বিজ্ঞানের ভাষায় একেই বলা হয় বেজ রুল প্রয়োগ করে আপডেটিং করা।
একজন বেজিয়ান উদ্যোক্তা তাহলে আসলে ল্যাবরেটরিতে থাকা একজন বিজ্ঞানীর মতো, যিনি একটা বন্য হাইপোথেসিস নিয়ে শুরু করেন ঠিকই, কিন্তু অন্ধবিশ্বাসের বদলে ল্যাবের ডেটা দিয়ে সেটা প্রমাণ করতে চান। খুব সুন্দর উপমা। কিন্তু এখানে একটা খটতা লাগে। আমরা তো জানি উদ্যোক্তারা স্বভাবতই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হন। তাহলে তাদেরই আশাবাদ কি সত্যি বৈজ্ঞানিক নাকি শুধুই একগুয়েমি? এই জায়গাটাতেই একজন সাধারণ মানুষের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে একজন বেসিয়ান উদ্যোক্তার বিশ্বাসের পার্থক্য কোথায় সেটা বোঝা যায়। উদ্যোক্তারা সক্রিয়ভাবে এমন সব এক্সপেরিমেন্ট চালাতে চান যা তাদের তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করতে পারে। মানে তারা শুধু কনফার্মেশন খোঁজেন না। একদমই না। আর এখানে বেইজ রুল প্রয়োগের মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রায়র বা পূর্ববিশ্বাস আপডেট করেন। কিন্তু যদি উদ্যোক্তারা নিছক জুয়ারি নাই হন, তবে শূন্য থেকে এই ধরনের যুগান্তকারী তত্ত্ব তারা কিভাবে গঠন করেন? মানে একজন স্টার্টআপ ফাউন্ডার ব্যবসা শুরু করার আগে কি মূলত একটা একাডেমিক গবেষণাপত্র লেখার মতোই কাঠামো তৈরি করেন? ব্যাপারটা অনেকটা সেরকমই। এখানে কজাল রিজনিং এবং সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ নিয়ে কথা বলাটা জরুরি। বইয়ে উল্লিখিত এয়ারবিএনবি উদাহরণটা যদি আমরা টানি, হ্যাঁ, দৈনন্দিন জিনিসপত্র ভাড়ায় খাটানোর এই শেয়ারিং ইকোনমি মডেলে তো অনেকগুলো ধাপ ছিল। ঠিক, তারা এই জটিল সমস্যার ছোট ছোট অংশগুলোর সমাধানের মাধ্যমে একটা যৌক্তিক এবং কার্যকারণ ভিত্তিক পথ তৈরি করেছিলেন। এখানে সিম্পল বেজিয়ান লার্নিং আর ডিপ বেজিয়ান লার্নিং এর একটা পার্থক্য আছে, তাই না? হ্যাঁ, অত্যন্ত সহজ ভাষায় বলতে গেলে ডিপ বেজিয়ান লার্নিং শুধু উদ্যোক্তাকেই পথ দেখায় না, বরং বিনিয়োগকারীদের রাজি করাতেও সাহায্য করে, কারণ তখন পুরো ব্যাপারটার গভীরে একটা সায়েন্টিফিক মডেল থাকে। তত্ত্ব তো তৈরি হলো, কিন্তু বাস্তব দুনিয়ায় সেই তত্ত্বের পরীক্ষা কিভাবে হয়? ডেটা থেকে শেখা বা এক্সপেরিমেন্টেশনের বিভিন্ন স্তর তো আছে। অনেক সময় এক্সপেরিমেন্ট থেকে কেন কিছুই শেখা যায় না সেটা বোঝাটা খুব জরুরি। আর এরপরই আসে উপদেশের অসাধারণ ভূমিকা। হটমেলের গল্পটা এখানে দারুণভাবে খাটে। সাবির ভাটিয়া এবং জ্যাক স্মিথকে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট টিম ড্র্যাপার একটা ছোট্ট উপদেশ দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, তিনি বলেছিলেন প্রতিটি ইমেলের নিচে গেট ইয়োর ফ্রি ইমেল অ্যাট হটমেল লেখার জন্য, আর সেটাই তাদের 30 মিলিয়ন গ্রাহক এনে দেয়। মানে উপদেশ নেওয়া মানে হলো নিজের টাকা খরচ করার আগেই অন্য কারো মস্তিষ্কে নিজের আইডিয়াটার একটা সিমুলেশন চালিয়ে নেওয়া। চমৎকার বলেছেন। এই সিমুলেশন বা উপদেশ কিভাবে উদ্যোক্তাদের কনফার্মেশন বায়াস কাটাতে সাহায্য করে সেটা ভাবলে অবাক লাগে। কিন্তু অনেক মানুষের উপদেশ একসাথে নিলে আবার একটা সমস্যাও তো আছে। হ্যাঁ, হার্ড মেন্টালিটি বা দলবদ্ধ চিন্তার একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তাই একজন বেজিয়ান উদ্যোক্তাকে সতর্কভাবে ডেটা বিশ্লেষণ করতে হয়। এই যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াগুলোর কথা আমরা বলছি, এগুলো কি নতুন গবেষক বা উদ্যোক্তাদের শেখানো সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব। কিভাবে র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়ালস বা আরসিটি ব্যবহার করে উদ্যোক্তাদের এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে, বইয়ের শেষ খণ্ডে সেটাই আলোচনা করা হয়েছে। লার্নিং টুলস এবং কম্পিউটার বেসড সিমুলেশনের মাধ্যমে কিভাবে কজাল রিজনিং বাস্তব দুনিয়ায় প্রয়োগ করা সম্ভব, সেটা সত্যি দারুণ একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, সিমুলেশনগুলো এক্ষেত্রে খুব কাজে দেয়। কিন্তু যুগ যুগ ধরে তো আমরা শুনে আসছি যে উদ্যোক্তাদের সাফল্যের পেছনে একটা গাট ফিলিং বা অন্তর্দৃষ্টি কাজ করে। সেটাকে কি আসলে ক্লাসরুমে বা সিমুলেশনে শেখানো সম্ভব? বেসিয়ান এন্টারপ্রেনারশিপ প্রমাণ করে যে এটা নিছক কোনো জাদু বা গাট ফিলিং নয়, বরং এটা একটা সুশৃঙ্খল অ্যালগোরিদম বা পদ্ধতি। তার মানে সঠিক টুলস এবং ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে এই মানসিকতা অবশ্যই শেখানো সম্ভব। একদম, যা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন আশাদের জন্য অত্যন্ত আশাবঞ্জক একটা বিষয়। যারা নতুন একাডেমিক গবেষক, তারা এই বইটির অধ্যায়গুলো থেকে শুধু ব্যবসার নয়, যে কোনো অনিশ্চিত পরিবেশের সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটা চমৎকার কাঠামোগত পদ্ধতি শিখতে পারেন। ঠিক, অনিশ্চয়তাকে ভয় না পেয়ে কিভাবে তাকে ডেটা দিয়ে জয় করা যায়, সেটাই এই বইয়ের মূল শিক্ষা। আচ্ছা, একেবারে শেষে এসে একটা নতুন ভাবনার কথা বলতে চাই। যদি সফল উদ্যোক্তাদের পুরো প্রক্রিয়াটিকেই বেসিয়ান আপডেটিং এবং কজাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একটা সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে ফেলা যায়, বেশ ইন্টারেস্টিং শোনাচ্ছে। তবে কি ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই অ্যালগরিদমগুলো মানুষের চেয়েও সফল এবং নির্ভুল স্টার্টআপ ফাউন্ডার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে? এটা তো দারুণ একটা চিন্তার খোরাক। এআই যদি মানুষের বায়াস ছাড়াই এই অ্যালগরিদম রান করতে পারে,
তবে তো সেটা একটা বিপ্লবী হবে। একদম। এই চমৎকার একটা ভাবনার জায়গা তৈরি করেই আজকের মতো আমাদের এই অন্তরঙ্গ এবং প্রশান্তিদায়ক আলোচনা শেষ করছি। আবার কথা হবে আগামী পর্বে। ভালো থাকবেন সবাই। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। जरा अपनी जेब या डेस्क पर रखे स्मार्टफोन के बारे में सोचिए। मतलब उसमें दर्जनों अलग अलग ऐप्स मौजूद हैं, है ना? लेकिन क्या ये बहुत आमतौर पर लोगों को पता है कि जब पहली बार आईफोन का विचार जमीन पर उतर रहा था तो स्टीव जॉब्स इसके अंदर किसी भी बाहरी ऐप, मेरा मतलब है थर्ड पार्टी एप्स, को जगह देने के सख्त खिलाफ थे। हाँ, वो तो पूरी तरह से क्लोज्ड सिस्टम चाहते थे। बिल्कुल। उनका दृढ़ विश्वास था कि बाहरी डेवलपर्स एप्पल के उस सलीके से बनाए गए इकोसिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। वे एक बंद और नियंत्रित व्यवस्था चाहते थे। फिर भी आज ऐप स्टोर दुनिया की सबसे बड़ी और मुनाफे वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। तो स्टीव जॉब्स को अचानक कोई ईश्वरीय ज्ञान तो नहीं मिला था। नहीं, कोई जादू नहीं हुआ था। हाँ, उन्होंने बस बाजार से आ रहे डेटा को देखा और अपनी सबसे गहरी पूर्व धारणा को बदल दिया। Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो आज पूरी दुनिया के इंटरनेट की रीढ़ है। सही कहा। लेकिन ये जेफ बेजोस के दिमाग में किसी भव्य मास्टर प्लान के रूप में नहीं आया था। Amazon ने बस अफिलिएट सेलर्स के साथ एक छोटा सा तकनीकी प्रयोग किया था और उस प्रयोग से मिले नतीजों ने एक पूरी नई दिशा खोल दी। और नेटफ्लिक्स को ही देख लीजिए, शुरुआत में वो ब्लॉकबस्टर की तरह ही हर रेंटल पर पैसे लेते थे। हाँ, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन सब्सक्रिप्शन मॉडल मनोरंजन की दुनिया का व्याकरण ही बदल देगा। ये सभी घटनाएं उस पुराने और घिसे पिटे मिथक को जड़ से उखाड़ फेंकती हैं कि महान संस्थापक जन्मजात दूरदर्शी होते हैं जो भविष्य देख सकते हैं। वास्तविकता ये है कि वो एक वैज्ञानिक की तरह काम करते हैं। बिल्कुल एक वैज्ञानिक की तरह। वे अपनी पुरानी मान्यताओं को नए डेटा की कसौटी पर कसते हैं और उन्हें लगातार अपडेट करते हैं। और ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना, ये सफलता को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। अक्सर जब लोग पीछे मुड़कर किसी बड़ी कामयाबी को देखते हैं तो वो एक सीधी और साफ रेखा जैसी लगती है। हाँ, जैसे सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ हो। एकदम सही। लेकिन जमीनी हकीकत में ये अंधेरे में प्रयोग करने और डेटा से टकराकर अपनी दिशा बदलने की एक बेहद उलझी हुई प्रक्रिया होती है। और इसी गहरी और जटिल प्रक्रिया को सुकून से समझने के लिए आज की हमारी ये चर्चा MIT प्रेस द्वारा ओपन एक्सेस पब्लिश की गई एक बेहद शोधपरक किताब पर आधारित है, जिसका नाम है Bayesian Entrepreneurship। जी, इस विचारोत्तेजक पुस्तक को अजय अग्रवाल और उनकी टीम ने संपादित किया है। जब हम इस टीम की पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये कोई सामान्य संकलन नहीं है। मतलब इसमें दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थानों के दिग्गज शामिल हैं। बिल्कुल। अजय अग्रवाल खुद यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रॉटमंड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन में जेफरी टैबर चेयर हैं, और वो उस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन लैब के संस्थापक भी हैं जिसने स्टार्टअप्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। और उनके साथ बोकोनी यूनिवर्सिटी और MIT स्लोन के शोधकर्ताओं की एक पूरी फौज है। हाँ, इस टीम की बौद्धिक गहराई सचमुच असाधारण है। बुकोनी यूनिवर्सिटी से आर्नाल्डो कामुफो हैं, जो SDA बुकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में ION मैनेजमेंट साइंस लैब के को डायरेक्टर भी हैं। और उन्हीं के संस्थान से मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन के प्रोफेसर अल्फोंसो गाम्बरदेला भी इस शोध का हिस्सा हैं, है ना? सही कहा। और टोरंटो से ही जोशुआ गैंस भी जुड़े हैं, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर होने के साथ साथ जेफरी एस स्कोल चेयर भी संभालते हैं। वे द डिसरप्शन डिलेमा के लेखक हैं और प्रिडिक्शन मशीन्स तथा इनोवेशन प्लस इक्वालिटी के सह लेखक भी हैं। और MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से सीनियर लेक्चरर एरिन L स्कॉट और डेविड सन ऑफ प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट स्कॉट स्टर्न ने भी इस किताब को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। जी, ये पूरी टीम मिलकर इस बात की तह तक जाती है कि कैसे अनिश्चितता के बीच निर्णय लिए जाते हैं। और इस चर्चा को एक वैचारिक दिशा देने से पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना साझा करना आवश्यक है। हाँ, हमारे प्रोड्यूसर मयूख मुखोपाध्याय वाली बात। बिल्कुल, उन्होंने इस संपादित पुस्तक पर एक विस्तृत बुक रिव्यू निबंध लिखा है। यह निबंध जर्नल ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में स्वीकार और प्रकाशित हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अकादमिक शोध की दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले लोग जानते हैं कि ये एक प्रतिष्ठित
ABDC-B और ABS-1 जर्नल है। जी, इस निबंध को पढ़ने के लिए इसका लिंक हमने शो नोट्स में उपलब्ध करा दिया है। ये यकीनन एक बड़ी उपलब्धि है और इस शोध यात्रा को और भी प्रामाणिक बनाती है। और इसी शोध यात्रा के क्रम में एक और बदलाव पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, जो हमने नया शेड्यूल शुरू किया है। बिल्कुल, मार्च 2026 से हमारी इन चर्चाओं का स्वरूप अब साप्ताहिक हो गया है। अब हर रविवार और सोमवार को नए एपिसोड्स आते हैं, जिसमें रविवार का दिन किसी क्लासिक पेपर या ऐसी ही किसी किताब की समीक्षा के लिए समर्पित रहता है, और सोमवार को ध्यान टॉप टियर पीयर रिव्यूड जर्नल्स के बिल्कुल ताज़ा पब्लिकेशंस पर केंद्रित होता है। इस वैचारिक यात्रा में साथ बने रहने वाले सभी वफादार श्रोताओं का ये समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और इस साप्ताहिक बदलाव के पीछे एक बहुत ही गंभीर कारण भी छिपा है। हाँ, जलवायु परिवर्तन वाला पहलू। जी, आज हम जिस तकनीकी युग में जी रहे हैं, वहाँ AI असिस्टेड सिस्टम्स के बैकएंड डेटा सेंटर्स पानी की एक बहुत बड़ी मात्रा निकल जाते हैं। तकनीक की ये प्रगति प्रकृति और जलवायु पर भारी दबाव डाल रही है। तो अपनी इन चर्चाओं की रिलीज को साप्ताहिक रूप से सीमित करना जलवायु परिवर्तन की दिशा में हमारा एक सचेत और जिम्मेदार कदम है। बिल्कुल, ऐसा करने से पर्यावरण पर पड़ने वाला बोझ कम होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा करने के बावजूद हमारी चर्चाओं की वैचारिक गहराई और सुकून पर कोई असर नहीं पड़ता। तो जो भी लोग अकादमिक दुनिया में नए हैं या जो बस अपनी शोध यात्रा का पहला कदम रख रहे हैं, उनसे यही आग्रह है कि शो नोट्स में दिए गए लिंक से इस ओपन एक्सेस किताब को पढ़ने का समय जरूर निकालें। हाँ, कोई इस चैनल को सब्सक्राइब करे या ना करे, लेकिन इस किताब के पन्नों में जो वैज्ञानिक नजरिया है वो सोचने की प्रक्रिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। एकदम सही। तो आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य उन लोगों के लिए इस किताब के दर्शन को सुलझाना है जो प्रायर या हाइपोथेसिस जैसे शब्दों से रोज टकराते हैं। तो अगर हम शुरुआत से बात करें तो इस किताब का जो सबसे पहला विचार है वो बेजियन एंटरप्रेन्योरशिप की व्याख्या करता है। जी, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। अकादमिक दुनिया में अक्सर इफेक्चुएशन या 90 अनिश्चितता जैसे भारी भरकम शब्द उछाले जाते हैं, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये नया बेजियन नजरिया इनसे कैसे अलग है। इस अंतर को समझने के लिए हमें इन सिद्धांतों की कार्यप्रणाली को बहुत ही व्यावहारिक ढंग से देखना होगा। 90 अनिश्चितता को ऐसे समझिए जैसे कोई एक ऐसा खेल खेल रहा हो जहां उसे पासे फेंकने हैं, लेकिन उसे ये तक नहीं पता कि उस पासे के कितने पहलू हैं या उस पर नंबर भी लिखे हैं या नहीं। ओहो, मतलब उसमें भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाना गणितीय रूप से असंभव होता है। बिल्कुल असंभव। और दूसरी तरफ इफेक्चुएशन का सिद्धांत है। ये ऐसा है जैसे कोई बावर्ची रसोई में जाए, ये देखे कि फ्रिज में कौन कौन सी सब्जियां बची हैं और उन्हीं से कोई नई डिश तैयार कर दे। अच्छा, तो यहाँ अवसर पहले से मौजूद नहीं होते, बल्कि जो उपलब्ध संसाधन है बस उन्हीं से उन्हें गढ़ा जाता है। जी, लेकिन बेशियन नजरिया पूरी तरह से एक अलग धरातल पर काम करता है। इसमें माना जाता है कि एक व्यक्ति जब मैदान में उतरता है तो उसके दिमाग में एक बहुत ही मजबूत पूर्व धारणा होती है, जिसे प्रायर बिलीफ कहा जाता है, जिसे आम भाषा में अक्सर संस्थापक का आशावाद कह दिया जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये कोई हवा में लगाया गया तीर नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के अपने जीवन के अनुभवों, ज्ञान और दुनिया को देखने के नजरिए से बनी एक धारणा होती है। और एक बेजियन विचारक इस धारणा को अंतिम सत्य नहीं मानता। वो इस धारणा को लेकर बाजार में जाता है, छोटे छोटे प्रयोग करता है और जो नया डेटा उसे मिलता है उसके आधार पर बेस के नियम के अनुसार अपनी पुरानी धारणा को अपडेट करता है। तो अगर इस प्रक्रिया को बारीकी से देखें तो क्या इसका मतलब ये है कि एक नया रिसर्चर जो किसी लैब में अपना पहला पेपर लिख रहा है और एक एंटरप्रेन्योर जो गैराज में अपना नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है, उन दोनों के दिमाग की वर्किंग एक ही वैज्ञानिक तरीके से काम कर रही है? 100%। मतलब वे गैम्बलर या जुआरी नहीं है जो बस किस्मत के भरोसे अपना पैसा या समय दांव पर लगा रहे हैं। वे तो बकायदा एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं, लैब टेस्ट की तरह बाजार में प्रयोग कर रहे हैं और फिर जो नतीजे आ रहे हैं उसके हिसाब से अपनी थ्योरी बदल रहे हैं। ये तुलना सिर्फ सटीक ही नहीं बल्कि बेसियन सोच की पूरी आत्मा है। इस किताब के शुरुआती अध्यायों में इस बात को यूरेंट नाम के स्टार्टअप के उदाहरण से बहुत ही प्रभावशाली ढंग से समझाया गया है।
अच्छा, ये यूरेंट की क्या कहानी है? यूरेंट के संस्थापक के दिमाग में एक प्रायर बिलीफ था कि लोग कम कीमत वाले रोजमर्रा के सामानों को खरीदने के बजाय किराए पर लेना पसंद करेंगे। एक आम धारणा। हाँ, अब अगर वो एक जुआरी होता तो वो सीधा लाखों डॉलर खर्च करके एक बड़ा सा ऐप बनवाता और मार्केटिंग शुरू कर देता। लेकिन उसने एक वैज्ञानिक का रास्ता चुना। वो अपनी इस धारणा को टेस्ट करने के लिए विंटेज मिलों में गया और वहां आए लोगों से बात की, उनका इंटरव्यू लिया। लेकिन यहां मुझे एक समस्या नजर आती है। इंसान का दिमाग तो हमेशा उसी जानकारी को खोजना चाहता है जो उसकी पुरानी धारणा को सही साबित करे। तो क्या यूरेंट के मामले में उस संस्थापक को वो डेटा मिला जिसकी उसे उम्मीद थी? और यही पर बेजियन सोच की असली परीक्षा होती है। जब वो संस्थापक संभावित ग्राहकों से बात कर रहा था तो उसे जो डेटा मिला वो पूरी तरह से नकारात्मक था। बाप रे, मतलब लोगों ने मना कर दिया? जी, लोगों ने साफ कह दिया कि उन्हें सस्ते सामानों को किराए पर लेने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अब एक आम व्यक्ति इसे अपनी हार मानकर सब बंद कर देता। लेकिन डेटा हमेशा कुछ ना कुछ बोलता है, बस सुनने का नजरिया चाहिए। तो उसने उस नेगेटिव डेटा में क्या सुना? उस निराशाजनक डेटा के बीच भी एक पैटर्न छिपा था। संस्थापक ने नोटिस किया कि जो लोग उन मेलों में आ रहे थे वो सस्टेनेबिलिटी या पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर थे। अरे वाह, तो ये एक नया प्रायर बन गया। बिल्कुल, इस एक नए डेटा पॉइंट ने उसकी पूरी सोच को पलट दिया। उसने सस्ते सामान किराए पर देने का विचार छोड़ दिया और सस्टेनेबिलिटी को केंद्र में रखकर अपने बिजनेस का रास्ता ही बदल लिया, जिसे पिविट करना कहते हैं। ये तो नए रिसर्चर्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब उनका प्रयोग फेल होता है या डेटा उनकी हाइपोथेसिस को गलत साबित करता है तो वो विफलता नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो नकारात्मक डेटा दरअसल एक नए और अधिक यथार्थवादी सत्य की ओर इशारा कर रहा होता है। लेकिन यहाँ एक उलझन भी पैदा होती है। कैसी उलझन? अगर डेटा के आधार पर रास्ता बदलना ही सब कुछ है तो क्या कोई बस बेतरतीब ढंग से चीजें नहीं बदलता रहेगा? मेरा मतलब है, अगर किसी एंटरप्रेन्योर या रिसर्चर को एक नई हाइपोथेसिस बनानी है तो वो पहला विचार आखिर आता कहाँ से है? वो नया प्रायर शून्य से तो पैदा नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही विचारणीय सवाल है और इसी सवाल का जवाब देने के लिए रमानंदा और अन्य शोधकर्ताओं ने कॉजल रीजनिंग यानी कारण और प्रभाव के तर्क की बात की है। कारण और प्रभाव का तर्क? हाँ, डेटा इकट्ठा करना एक बात है, लेकिन ये समझना कि कोई चीज क्यों काम करेगी वो दूसरी बात है। प्रायर कभी भी शून्य से नहीं आता, ये एक तार्किक श्रृंखला का परिणाम होता है। तो इसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं? मल्टी स्टेज फाइनेंसिंग में ये बात सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है। जब कोई एंटरप्रेन्योर किसी निवेशक के पास जाता है तो वो ये नहीं कहता कि मुझे यकीन है कि ये उत्पाद बिकेगा। वो दरअसल कहता है कि मेरे पास एक स्पष्ट तार्किक कारण है कि उत्पाद क्यों बिकना चाहिए। मतलब वो एक ठोस तर्क पेश करता है। जी, और वो कहता है कि मुझे आपसे जो पैसा चाहिए वो इस उत्पाद को बनाने के लिए नहीं, बल्कि उस तर्क को एक छोटे प्रयोग के जरिए टेस्ट करने के लिए चाहिए। निवेशक भी इसी बेसियन नजरिए से सोचते हैं। वो एक ऐसा प्रयोग डिजाइन करने के लिए पैसे देते हैं जो अनिश्चितता को सबसे तेजी से कम कर सके। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये दृष्टिकोण तो अकादमिक रिसर्च की दुनिया से हूबहू मेल खाता है। जी, बिल्कुल मेल खाता है। अगर हम किसी नए रिसर्चर को देखें तो वो भी तो अपनी रिसर्च कमेटी या फंडिंग एजेंसी को अपना प्रपोजल बिल्कुल इसी तरह बेचता है। आपको ना सिर्फ खुद की तसल्ली के लिए प्रयोग करना है, बल्कि डेटा इस तरह से पेश करना है कि सामने बैठा हुआ पैनल, जिसकी अपनी कुछ पूर्व धारणाएं हैं, उस नए तर्क पर विश्वास करने को मजबूर हो जाए। एकदम सही। रिसर्चर को ये साबित करना पड़ता है कि उसका अगला प्रयोग अनिश्चितता के बादलों को कैसे छांटेगा। और एलिना नोवेली का शोध इसी बात को पुष्ट करता है कि कॉजल रीजनिंग और वैज्ञानिक तरीका सिर्फ नई दिशा खोजने में ही मदद नहीं करता, बल्कि ये तय करने में भी मदद करता है कि कब किसी रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। ओहो, मतलब प्रोजेक्ट टर्मिनेशन में भी मदद करता है। जी। जो लोग कारण और प्रभाव के आधार पर प्रयोग डिजाइन करते हैं वे खराब आइडियाज को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और उन्हें बंद कर देते हैं। एक रिसर्चर जो सालों तक एक ही दिशाहीन सवाल के पीछे भागता रहता है वो अपना बहुत सारा समय बर्बाद करता है। सही बात है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये सिखाता है कि हार मानना या पीछे हटना कोई भावनात्मक निर्णय नहीं है, बल्कि वो नए डेटा के सामने अपनी पुरानी थ्योरी को खारिज करने का एक तार्किक कदम है। बिल्कुल। तो चलिए मान लिया कि धारणाएं बन गई, निवेशकों को बता दिया गया और प्रयोग भी शुरू हो गए,
लेकिन जब प्रयोग का असली डेटा सामने आता है तो क्या होता है? क्योंकि असली दुनिया का डेटा हमेशा शोर या नॉइस से भरा होता है। हाँ, डेटा से सीखना हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। कई बार डेटा ये समझ ही नहीं आने देता कि हमारी धारणा सही थी या गलत। तो ऐसे में कोई क्या करे? यहीं पर सुसान कोहेन और रेम्ब्रांड कोनिंग के अध्याय का जिक्र आता है, जो बताता है कि बाहरी सलाह किस तरह इस बेजियन प्रक्रिया का हिस्सा है। अच्छा, बाहरी सलाह। हाँ, सलाह को लेकर ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वो हमेशा कोई तैयार समाधान होती है। वे बताते हैं कि सलाह भी दरअसल एक और डेटा पॉइंट ही है। जब किसी उद्यमी या रिसर्चर का अपना डेटा धुंधला होता है तो वो अनुभवी लोगों के पास जाता है। इसका कोई उदाहरण है किताब में? रेंट द रनवे की कहानी इसका एक बहुत शानदार उदाहरण है। ये कंपनी डिजाइनर कपड़े किराए पर देना चाहती थी। ओके। जब वे मशहूर डिजाइनर डायने वॉन फर्स्टनबर्ग से मिले तो संस्थापकों के मन में गहरा डर था। उन्हें लग रहा था कि डायने कहेंगी कि किराए पर कपड़े देने से लोग नए कपड़े खरीदना बंद कर देंगे और उनका ब्रांड बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा सोचना स्वाभाविक भी था, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री का प्रायर तो हमेशा से एक्सक्लूसिविटी और ज्यादा से ज्यादा बिक्री पर आधारित रहा है। बिल्कुल, लेकिन डायने ने सिर्फ अपनी पुरानी मान्यताओं के आधार पर उन्हें खारिज नहीं किया। उन्होंने अपने विशाल अनुभव से एक नई कॉजल रीजनिंग पेश की। अरे वाह, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसे बिक्री कम करने वाले खतरे के रूप में मत देखो, इसे युवाओं के लिए एक मार्केटिंग चैनल के रूप में इस्तेमाल करो। वे लड़कियां जो आज महंगे कपड़े नहीं खरीद सकती, वे किराए के बहाने ब्रांड से जुड़ेंगी और कल जब उनके पास पैसे होंगे तो वे पक्की ग्राहक बनेंगी। ये सलाह तो उनके लिए सिर्फ एक दिशा निर्देश नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जानकारी थी जिसने उनके पूरे प्रयोग का अर्थ ही बदल दिया। जी, और इसी तरह एग्री लिग्निन नाम के स्टार्टअप का मामला है। वे खेती के कचरे से निकले लिग्निन से कागज की ट्रे बनाना चाहते थे। फिर क्या हुआ? जब वे सलाहकारों के पास गए तो पता चला कि उस बाजार में सरकारी नियम इतने पेचीदा हैं कि वहां टिकना नामुमकिन होगा। लेकिन उन्हीं सलाहकारों ने उन्हें एक नई दिशा दी, गार्डन नर्सरी। मतलब पौधों के लिए? हाँ, वहां उन ट्रे का उपयोग छोटे पौधे उगाने के लिए किया जा सकता था। इस सलाह ने उन्हें एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां उनके डेटा और उत्पाद दोनों का सही तालमेल बैठ गया। लेकिन यार, यहाँ मुझे एक बड़ी वैचारिक खामी नजर आती है। ये मान लेना कि हर सलाहकार या हर विशेषज्ञ जो कह रहा है वो फायदेमंद ही होगा, क्या खतरनाक नहीं है? आप किस तरह के खतरे की बात कर रही हैं? मेरा मतलब है, क्या होगा अगर सलाह देने वाले सभी लोग एक ही स्कूल ऑफ थॉट से आते हों, उन सबके पास एक ही जैसा अनुभव हो और उनके भीतर एक गहरा पूर्वाग्रह या बायस छिपा हो? अगर कोई युवा रिसर्चर या एंटरप्रेन्योर सिर्फ ऐसे ही लोगों से बात करे तो क्या वो एक इको चेम्बर में नहीं फंस जाएगा जहां हर कोई एक ही गलत पेपर को कोट कर रहा है? ये संदेह बहुत ही प्रासंगिक है और एक सच्चे वैज्ञानिक दिमाग की निशानी है। बेजियन दृष्टिकोण ये बिल्कुल नहीं कहता कि जो भी सलाह मिले उसे आंख मूंद कर मान लिया जाए। तो फिर इससे कैसे बचे? बेस का नियम ही इस बात पर टिका है कि हर नई जानकारी को उसके स्रोत की विश्वसनीयता के साथ तौलना चाहिए। अगर कोई रिसर्चर ऐसे लोगों से सलाह ले रहा है जो सभी एक ही बायस से ग्रसित हैं, तो उसका नया प्रायर भी दूषित हो जाएगा। तो फिल्टर करना जरूरी है। इसीलिए बेजियन दृष्टिकोण में सलाह को भी सोच समझकर अपडेट करना जरूरी है। मतलब एक्शंस को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। एक कुशल विचारक ये समझता है कि सलाहकार का अपना प्रायर क्या है और वो किन परिस्थितियों से वो सलाह दे रहा है। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में बहुत ही तार्किक और व्यवस्थित लगती है। डेटा इकट्ठा करना, शोर को छांटना, सलाह को फिल्टर करना और फिर अपनी धारणा को अपडेट करना। लेकिन एक सवाल जो स्वाभाविक रूप से उभरता है वो ये है कि क्या ये सब इतना आसान है कि इसे किसी क्लासरूम में सच में किसी नए एंटरप्रेन्योर या नए रिसर्चर को सिखाया जा सके? ये इस पूरी किताब का सबसे उम्मीद जगाने वाला हिस्सा है। एरिन एल स्कॉट, चियारेस पीना और अन्य लेखकों का शोध इसी बात को टटोलता है। तो क्या निष्कर्ष निकला उनके शोध से? अकादमिक दुनिया में यह साबित करने के लिए कि कोई चीज सचमुच काम करती है या नहीं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स या आरसीटीज का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जो विज्ञान में प्रभाव मापने का सबसे कठोर तरीका है। बिल्कुल। इन शोधकर्ताओं ने असल में रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किए और पाया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सिखाया जा सकता है। जिन उद्यमियों या छात्रों को इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कॉजल रीजनिंग का प्रशिक्षण दिया गया, उन्होंने बाकियों के मुकाबले कहीं बेहतर निर्णय लिए। मतलब ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, इसे सिमुलेशन और केस स्टडीज के जरिए क्लासरूम में सिखाया जा सकता है। जी,
MIT स्लोन की टैक्सी केस स्टडी इसका बहुत ही जीवंत उदाहरण है। अच्छा, ये टैक्सी वाली केस स्टडी क्या है? जरा सोचिए, एक टीम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल तकनीक को लेकर बहुत उत्साहित थी, वो एक ईवी आधारित टैक्सी कंपनी शुरू करना चाहती थी। उनके पास एक स्पष्ट प्रायर था कि वो सीधे आम जनता को टैक्सी सेवा देंगे। सुनने में तो ठीक लगता है। लेकिन जब उन्होंने इस बेजियन प्रशिक्षण के तहत अपने विचारों को एक सिमुलेशन में परखा, तो जो नतीजे आए वो उनकी शुरुआती सोच से बिल्कुल अलग थे। क्या नतीजे आए? उन्हें समझ में आया कि सीधे ग्राहकों से जूझने के बजाय एक दूसरा रास्ता कहीं ज्यादा सुरक्षित और मुनाफे वाला है। वो क्या? उन्होंने तय किया कि वो राइड शेयर ड्राइवर्स को अपनी इलेक्ट्रिक कारें लीज पर यानी पट्टे पर देंगे। ओहो, मतलब ड्राइवर्स को सीधा फायदा? हाँ, वे ड्राइवर्स जो रोज पेट्रोल पर भारी खर्च करते थे, उनके लिए ईवी लीज पर लेना एक बहुत बड़ा आर्थिक फायदा था। ये बदलाव सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि वे क्लासरूम की उस सुरक्षित जगह पर अपनी धारणाओं को टूटने देने के लिए तैयार थे। अगर इस पूरी बात को हम रिसर्च और अकादमिक दुनिया के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा सबक है। ये साबित करता है कि क्लासरूम या सिमुलेशन में फेल होना असल दुनिया या पीयर रिव्यू प्रोसेस में फेल होने से बहुत सस्ता और सुरक्षित है। एकदम सही बात है। इसके बजाय कि कोई रिसर्चर बिना किसी ठोस तार्किक आधार के अपनी बरसों की मेहनत को खारिज होते हुए देखें, एक अच्छे गाइड या मेंटर का शायद सबसे बड़ा काम ही यही है कि वो रिसर्चर को ये बेजियन नजरिया विकसित करने में मदद करें ताकि वो डेटा का सम्मान कर सके। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी परिचर्चा को समेटने की कोशिश करें तो ये बेजियन एंटरप्रेन्योरशिप असल में मानव मस्तिष्क की उस अद्भुत लोचशीलता का प्रमाण है जो नई जानकारी मिलने पर खुद को ढाल सकती है। जी। लेकिन इन सब बातों के बीच एक ऐसा विचार है जो रुककर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? अगर उद्यमशीलता और शोध का पूरा खेल सिर्फ पुराने डेटा के आधार पर नई धारणाओं को अपडेट करने का ही है, तो क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से बेहतर बेजियन एंटरप्रेन्योर बन सकता है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्योंकि एआई तो डेटा को इंसान से लाखों गुना अधिक तेजी से प्रोसेस कर सकता है। या फिर इंसानों के पास जो योजनाबद्ध संदेह है यानी मेथोडिक डाउट है और अकल्पनीय चीजों की कल्पना करने की जो क्षमता है, वो हमेशा एआई से एक कदम आगे रहेगी। सच में ये एक ऐसा वैचारिक बिंदु है जो बहुत लंबे समय तक मन में गूंजता रहेगा। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि भले ही तकनीक डेटा प्रोसेस करने की गति को बढ़ा दे, लेकिन उस डेटा के पार जाकर किसी नई दुनिया की कल्पना करना शायद हमेशा मानवीय चेतना का ही हिस्सा रहेगा। ये विचार हम सभी की शोध यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हैं। बस इसी सुकून और आत्मीयता के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है ये नजरिया आप सबके काम आएगा। Altså, prøv lige at tænke tilbage på Steve Jobs i de helt tidlige dage. Vi snakker dengang den allerførste iPhone lige var kommet på gaden. Ja, det var jo en fuldstændig revolutionerende tid. Det var det virkelig. Telefonen var en kæmpe sensation. Men bag kulisserne, der foregik der simpelthen en intens kamp, som mange måske ikke kender til. Nej, for han havde jo sine egne meget faste idéer, ikke? Lige præcis. Jobs var intet, altså nærmest decideret stedig modstander at lade uafhængige tredjepartsudviklere lave apps til telefonen. Wow, det er sjovt at tænke på i dag. Ja, men hans vision var total kontrol. Han ville have et lukket, helt perfekt designet økosystem, hvor Apple dikterede absolut alt. Det var hans urokkelige overbevisning. Men det holdt jo ikke stik særlig længe. Nemlig. For over næste år skete der noget ret bemærkelsesværdigt. Han ændrede mening. App Store blev født, og det åbnede ligesom slusene for en helt ny digital økonomi, der ændrede verdenshistorien. Og hvorfor skiftede han så spor? Det er jo netop det. Fordi ægte iværksætteri, selv for en mytisk figur som Jobs, det handler ikke om at klamre sig til en ufejlbarlig, fastlåst vision. Det handler om at lytte og observere markedets adfærd, og så justere sine overbevisninger, når der kommer ny data på bordet. Ja, i statistikkens verden vil vi jo sige, at han opdaterede sine priors. Lige netop. Han tillod simpelthen virkelighedens rådata og korrigerede den her indledende, meget stærke antagelse. Og den form for mental fleksibilitet er præcis kernen i det, vi skal tale om i dag. Så sæt dig godt til rette. Ja, for vi bygger dagens samtale på et virkelig spændende fundament. Det gør vi. Vi tager nemlig fat i den banebrydende bog, der hedder Bayesian Entrepreneurship. Den er udgivet af MIT Press, og hvilket er fantastisk for dig, der lytter med, så er den udgivet som Open Access. Det er altså stærkt, at den slags viden er frit tilgængelig, og det er altså ikke hvem som helst, der står bag. Nej,
Holdet bag bogen er nogle af de allerstørste stemmer inden for feltet. Vi har Ajay Agrawal, professor ved University of Torontos Rotman School of Management. Han er også grundlægger af Creative Destruction Lab. Ja, og fra Bocconi University i Italien har vi professor Arnaldo Camuffo og Alfonso Gambardella, som jo er professor i Management of Innovation. Præcis. Og vi må endelig ikke glemme Joshua Gans, som lytterne måske kender som forfatter til The Disruption Dilemma. Han er også fra Rotman School of Management. Og så er der Erin L. Scott og Scott Stern fra MIT Sloan School of Management. En virkelig tung og respekteret gruppe forfattere. Absolut. Og apropos respekteret, så skal jeg lige nævne med en vis stolthed, at vores egen producer, Mayukh Mukhopadhyay, faktisk har skrevet et utroligt skarpt boganmeldelses-essay af netop den her bog. Det er altså sejt gået. Det er jo blevet accepteret og udgivet i Journal of Small Business and Entrepreneurship, ikke? Nemlig. Hvilket for dem, der er nye i den akademiske verden, er et tidsskrift med ABDCB og ABS stor status. Det er en kæmpe blåstempling. Du kan finde et link til hans essay nede i vores show notes. Det er virkelig værd at læse som et supplement til bogen. Helt sikkert. Men inden vi ruller os helt ud i bogens koncepter, har jeg en vigtig besked. Siden marts 2026 er vi nemlig gået over til at være en ugentlig udsendelse. Ja, vi udkommer nu hver søndag og mandag. Præcis. Søndager er dedikeret til de her klassiske artikler eller store bøger som i dag, og mandag fokuserer vi benhårdt på nye publikationer fra top-tier peer-reviewed tidsskrifter. Og vi vil bare gerne sige tusind tak, fordi du støtter initiativet. Ja, for der er jo en meget specifik grund til, at vi har skåret ned på dagene. Nemlig, AI-assisterede produktioner som vores kræver enormt meget computerkraft. Og det betyder et massivt vandforbrug ude i datacentrene til køling. Det belaster klimaet. Så ved at begrænse os, giver vi lidt tilbage til klimakampen, uden at vi mister den dybde og ro i samtalerne, som du forventer af os. Og netop derfor håber vi også, at du vil tage dig tid til at læse bogen via linket i show notes, uanset om du abonnerer på kanalen eller ej. Helt enig. Og dagens samtale fungerer som din kapitel for kapitelguide, især skræddersyet til dig, der måske er ny i akademisk forskning og står på tærskelen til din egen forskningsrejse. Så lad os starte med det helt basale. Bogens første del prøver jo at aflive den her myte om den blinde, heroiske iværksætter. Hvem er det, de kalder homo entrepreneuricus? Ja, for at forstå den her iværksættertype, skal vi først forstå det miljø, de opererer i. Og her introducerer bogen begrebet Knightian uncertainty, altså radikal usikkerhed, opkaldt efter økonomen Frank Knight. Okay, så vi snakker ikke bare om almindelig risiko. Nej, og det er en afgørende forskel. Almindelig risiko, det er lidt ligesom at kaste en terning. Du ved ikke, hvad slaget bliver, men du ved, at der er 6 sider, og du kender sandsynligheden. Knightian uncertainty er derimod, altså det, når du ikke engang ved, hvor mange sider terningen har. Du ved faktisk ikke engang, om det overhovedet er en terning, du står med i hånden. Wow, det lyder jo fuldstændig lammende. Det er det også for de fleste, og derfor har mange troet, at iværksætteri bare handlede om ren intuition, eller den her populære fail-fast-metode, hvor man bare kaster spaghetti på væggen og ser, hvad der hænger ved. Men bogens kerne er, at bayesiansk iværksætteri handler om noget andet. Og hvad er det så? Det handler om, at iværksættere starter med stærke subjektive forventninger, deres priors. De tror enormt meget på en idé, og så bruger de systematiske eksperimenter til at teste og opdatere den tro, når virkeligheden rammer dem. Okay, jeg tror lige, jeg skal bruge en analogi her. Det lyder jo næsten som om, at iværksætteren er en videnskabsmand, men i stedet for at stå i et sterilt laboratorium, så er markedspladsen ligesom deres petriskål. Lige præcis. Det er et fantastisk billede. Markedspladsen er laboratoriet. Men vent, der er noget, der skuer for mig her. Hvis iværksættere i sagens natur er enormt optimistiske, altså de skal jo ofre blod, sved og tårer for at starte, er de så overhovedet psykologisk i stand til at være bayesianske? Kan de overhovedet lytte til negative data, eller forvrænger de bare virkeligheden for at passe til deres drøm? Det er et super relevant spørgsmål, og det er noget, forfatterne virkelig dykker ned i bogens kapitel 2 og 5. Man kunne jo nemt tænke, at de bare ofrer for confirmation bias. At de er stedige tober. Ja, nemlig. Det tænker man jo ofte, når man ser dem knokle derudad. Men forskningen viser, at dem her voldsomme optimisme faktisk er en matematisk nødvendighed. Prøv at tænke på prisen for at eksperimentere. Det koster tid, kapital og et enormt socialt pres at starte en virksomhed. Helt sikkert.
Hvis en iværksætter startede med en 100% neutral, kølig vurdering af chancerne for succes, som jo oftest er forsvindende små, så vil matematikken sige til dem, at de slet ikke burde starte. Så optimismen er ligesom det brændstof, der får dem i gang? Præcis. Den er nødvendig for overhovedet at betale prisen for eksperimentet. Men betyder det så, at de er døde for dårlige nyheder? Nej. Bogen viser faktisk, at de systematisk opdaterer deres overbevisninger, når de præsenteres for reelt data. Så de justerer faktisk kursen? Ja, fordi deres udgangspunkt var så stærk og positiv, tager det bare mere negativ data og slå ideen helt ihjel, end det ville for dig og mig, der kigger på det udefra. Men de reagerer stadig rationelt på dataene over tid. Det giver faktisk rigtig god mening. Men det leder os jo frem til næste store spørgsmål, som bogen dækker i del 2. For hvis vi opdaterer vores idéer baseret på data, jamen data findes jo ikke i et tomrum, vel? Hvor kommer de der oprindelige overbevisninger, altså deres hypoteser, overhovedet fra? Og her rammer du ned i noget af det allervigtigste. Kapitel 6-8 fokuserer på kausalresonering, altså årsagssammenhænge. Før du kan teste noget som helst, er du nødt til at bygge en teori om værdiskabelse. Så man skal vide, hvorfor noget virker, ikke bare at det virker. Ja. Bogen skelner mellem simpel læring og dyb Bayesian-læring. Simpel læring er bare at skrue på en prisknap og se salget falde. Dyb læring, det er, når du får et resultat, der fuldstændig omskriver din underliggende logik om, hvordan verden hænger sammen. Og her synes jeg, bogen har et virkelig godt eksempel med historien om virksomheden YouRent. Og ja, det er en fantastisk case. Fortæl den endelig. Altså, stifteren havde en meget klar teori. Han ville bygge en udlejningsplatform for ting af lav værdi. Folk skulle leje hverdagsting af hinanden i stedet for at købe dem. Så han gik videnskabeligt til værks og testede det på vintage-markeder. Han havde ellers sat en hård regel op for sig selv på forhånd, ikke sandt? Jo. Hvis ikke 60% af de adspurgte sagde ja til ideen, ville han droppe den. Og dataene kom tilbage med et bragende nej. Folk orkede ikke besværet med at lege billige ting. Det var en massiv negativ opdatering af hans priv, så han lukkede simpelthen ideen. Men det var ikke forgæves. Slet ikke. For gennem eksperimentet havde han jo snakket med kunderne og lærte, at de måske ikke ville lege, men at de var enormt passionerede omkring bæredygtighed. Fordi han havde en teori og en ramme, kunne han bruge den viden til at bygge en helt ny og bedre teori for sin næste virksomhed. Og det er præcis dyb Bayesiansk læring. Han opdagede en ny variabel, der var langt stærkere. Men jeg er nødt til lige at udfordre dig lidt på det her. For at bygge en forretning er jo dyrt og kaotisk. Hvad nu hvis et eksperiment er fyldt med støj og giver et falsk negativt resultat? Lukker iværksætteren så den næste store milliardidé for tidligt, bare fordi en tilfældig test ramte ved siden af? Det er en frygt, mange har, men kapitel 7 adresserer præcis det her med store randomiserede forsøg, også kaldet RTT'er, som forskerne har lavet på rigtige startups. Og hvad viste det? De viste, at den videnskabelige tilgang faktisk ikke fører til en overkorrektion. Man slår ikke gode idéer ihjel for tidligt. Tværtimod skærer det bare de åbenlyst dødfødte projekter fra langt hurtigere. Så man sparer dyre lærepenge. Nemlig. Du sparer kapital og 3 års spildt arbejde, som du stadig kan bruge på ægte vækst. Og det bringer os faktisk videre til del 3 af bogen. For når du så er ude at teste din teori, hvordan sikrer du så, at du ikke bare bliver forvirret af virkelighedens støj? Ja, for kapitel 9-11 dykker jo ned i, hvor nemt det er at designe et eksperiment forkert. Præcis. Hvis du ændrer 3 ting på din hjemmeside på én gang, og salget stiger, så ved du jo ikke, hvad der skabte effekten. Det er et uinformativt eksperiment. Det giver mening. Men det, jeg synes er allermest fascinerende i den del af bogen, er deres syn på rådgivning. At modtage råd er i sig selv en bayesiansk proces. Ja, og her er casen med Rent the Runway jo et skoleeksempel. Og den er så god. Altså 2 kvindelige stiftere, der pitcher ideen om at lege luksuskjoler i stedet for at købe dem, de får foretræde for den helt store modedesigner, Diane von Furstenberg. Hun sagde, brug legemodellen som markedsføring for at nå unge kvinder, der ikke har råd til mærket endnu. Og pludselig blev et ubehageligt nej til en helt ny forretningsmodel. Eksperimentet skiftede karakter, og de tilpassede sig med enorm succes. Det er jo det, der er så fedt. Det lyder jo næsten som om, at gode råd ikke bare er nogen, der giver dig svaret i en facitliste. Gode råd er som at få foræret en bedre linse til sit mikroskop, så man kan se sit eget eksperiment meget skarpere. Lige præcis den analogi. Og bogen har også eksemplet med agrilignin, der startede med landbrugsfilm, men eksperternes råd om lange selvcykluser fik dem til at pivotere til plantecentre i stedet for. Linsen blev skiftet ud. Helt sikkert. Men, og det her er et stort men, iværksætteren skal passe djævlesk på det, bogen kalder korreleret rådgivning.
Korreleret rådgivning, altså at rådene ligner hinanden. Ja. Hvis du spørger 5 investeringsrådgivere fra den samme handelsskole, så får du 5 gange den samme bias. Rådgiverens egen baggrund afgør værdien af deres råd. Får du det samme svar fra 5 personer med samme baggrund, har du matematisk set kun fået 1 datapunkt. Hold da op, ja. Man tror, man har konsensus, men man har bare et ekokammer. Lige netop. Okay, så alt det her lyder jo uhyrligt logisk op på papiret, og det her bogens 4. del, hvordan i al verden tager vi de her lidt tunge bayesianske koncepter og lærer dem for os til næste generation af forskere og iværksættere? Og det er her kapitel 12-14 virkelig skinner igennem. Man er nødt til at lære studerende at tænke kausalt, før de overhovedet får lov at røre ved rigtige penge. Og her understreger de især brugen af simulationer. Så man træner dem i et sikkert, lukket miljø? Ja, for du kan lære at bygge en model, teste en hypotese og opdatere din priorer virtuelt. Og der nævner bogen jo historien om det her studenterteam, der startede et projekt, de kaldte Taxi. Ja, et klassisk eksempel på struktureret læring. Deres oprindelige IB var et lokalt taxaselskab, der udelukkende kørte elbiler for klimaets skyld. En smuk idé. Men gennem deres strategiske eksperimentering i simulationen, fandt de lynhurtigt ud af deres egne blinde vinkler omkring industriens økonomi. Turen i regnearket afslørede, at matematikken bare ikke fungerede, ikke? Præcis. Så de foretog et vildt elegant pivot. I stedet for at køre taxaer selv, begyndte de at lease elbilerne ud til eksisterende rideshare-chauffører hos de store selskaber. Og hvad betød det for resultatet? Det var en win-win. Det hævede chaufførernes løn, fordi de fik bedre biler, og det sænkede byens udledning, som var det oprindelige mål. Det viser jo bare værdien af struktureret læring. Du når frem til et bedre mål hurtigere. Jo, det lyder jo smukt alt sammen. Men jeg sidder altså stadig med en lille uro. Når man sætter iværksætteri ind i regneark, simulationer og bayesianske formler, dræber man så ikke lidt den der magi, kreativiteten og rebelskheden, der historisk set har bygget de allermest transformative virksomheder? Jeg forstår godt frygten. Det kan lyde tørt. Men bogen og den nyeste forskning argumenterer for det stik modsatte. Det frigiver faktisk magien. Hvordan det? Altså, forestil dig at være i et konstant kaos ved at fjerne den unødige støj og ved at reducere de fatale, dyre fejltrin i opstartsfasen, så får iværksætteren pludselig ressourcerne og roen til at være utrolig kreativ omkring de problemer, der faktisk betyder noget. Så det fjerner ikke magien, det fokuserer den bare derhen, hvor den går gavn. Præcis. Det strammer fokuset. Det dræber overhovedet ikke den rebelske kreativitet. Det giver faktisk utrolig meget mening, når man ser det på den måde. Og det binder ligesom en sløjfe på hele vores gennemgang af bogen i dag. Men før vi runder helt af, så er der altså lige en sidste fremprovokerende tanke, der rumstreger i mit hoved. Lad mig høre. Hvis iværksætteri primært er en ret systematisk proces med kausal teoridannelse og hurtig bayesiansk opdatering af hypoteser baseret på markedsdata, hvad sker der så i fremtiden? Tænker du på teknologi? Ja, for vi står midt i en tid, hvor kunstig intelligens allerede er bygget på maskinlæring og algoritmer. De maskiner begynder jo at kunne køre præcis disse bayesianske eksperimenter i stor skala, langt hurtigere og meget mere fordomsfrit end noget menneske. Det er en ret vild tanke. Ikke? Vil vores Homo entrepreneuricus på et tidspunkt simpelthen blive erstattet af en machina entrepreneuricus? En maskine, der kan bygge og validere komplekse startups på et splitsekund. Det er i hvert fald et scenarie, man kan ligge vågen og gruble over. Det må man sige. Og det vil jeg lade dig, kære lytter, tænke videre over på din egen forskningsrejse. Vi håber, du er blevet inspireret. Husk endelig at tjekke show notes for linket til Open Access-bogen, og selvfølgelig Mayukh Mukhopadhyas fremragende essay for at få lidt ekstra perspektiv med på vejen. Hej en fuldstændig fantastisk og indsigtsfuld uge fremover. Vi lyttes ved på næste søndag.